All right, so this topic is about what is minimum system. So we will be talking whole day about the minimum components required to make a single board computer. So we have stopped yesterday's session at this slide, which I said some keywords called industrial coding, real-time software, and also said about development of a scheduler, so like operating system, kernel. So all three those keywords are indicative on this slide. But when I am saying a minimum system, all of them, whatever is shown in this slide, all of them are minimum. Here there is no options. This is minimum, bare minimum. Okay. I mean to say this entire thing is not different components. Okay. In computer, what happens? Computer minimum system means at least motherboard is required. SMPS power supply is required. The display section is required. Okay. The keyboard interface is required. That itself is a minimum system. That box is required. You cannot do only with the CPU. If I, let's say, buy i3 from the market, what will you do with that? Memory is not there. Keyboard it doesn't understand. Display it doesn't understand. Hard disk it doesn't. Any of them it doesn't understand. That only you have purchased the CPU. That's all. That's why it is called microprocessor. So in computer, microprocessor, CPU is only one part. Rest of them are again different components. So their minimum system means all of them are required. Otherwise, you can understand if keyboard is not working, what happens? If mouse is not working, what happens? If display is not working, what happens? If hard disk is not there, where the operating system will come? If primary memory is not there, then where the secondary memory programs will be loaded into the primary memory, because your CPU doesn't have memory, and primary memory is volatile in nature. So you require a non-volatile memory, which is your secondary storage. Otherwise, programs data will be lost. So like that, their minimum system means whatever you are purchasing is already minimum system, right? On top of it, what you are adding is, okay, I know 4 GB is not enough, I want 8 GB. So that you are optional, right? Or let's say, no, I don't want a hard disk, I want to have that SATA disk. Okay, that's something extra money, another 5,000 you pay it. Oh, I don't like this graphics card, then I will buy NVIDIA card. Another 15,000 rupees you pay for that. Or you don't like that music multimedia card, you want some a better amplifier sort of a thing. Then another multimedia card will come. So those are all you are maximizing the thing. Then people are working in the workstations, right? Music, the studios where they do animations and all. Their system is not having one CPU, more than one CPU, not i3, no, more than one i3, like that. That is maximum. But minimum means whatever today you have on your table is a minimum system. So similarly, when I am saying single board computer, this slide when I have presented, this itself is a minimum system for us. So whatever is shown is not external. They are not external components. Don't think that your those timers, right? The priorities, the interrupts, right? The inputs, outputs, they are not external. Everything is one single chip, one IC. Okay, one IC I am talking. That's all. So by that's why I'm saying we will slowly do the course.
Let's not populate everything and let's not get it confused. Whatever you have mounted, you should know what you have mounted and they are functioning or not. How to test them. So initially it is a skilled job, because I hope you can understand what is identifying the components, how to mounting the components, or before that how to designing this kind of a PCB, what is the purpose of these copper tracks, and what is the difference between the holes, and in this also which of them are surface mounted devices, which of them are having a holes and pins. So some nomenclature you need to understand every branch of student, because these hardware components are everywhere in every product, they are there. So some knowledge is minimum required. Which is conducting, which is non-conducting? Can I keep this PCB on a metal piece, right? It will short circuit all the pins. So you should always keep it on a non-conductive thing, like that. So some knowledge is minimum required. Otherwise, you may damage unnecessarily when you handle these systems. Okay. So this slide is our set target for us in the entire course. Whenever you develop the software, I wish the structure of your program should be like this. Okay. This slide, what it is indicating is your programs are, this will be achieved. This will be achieved by programming like this. Means your program should not be in one single loop. Then only it is possible. Okay. You cannot put everything in one single process. Main and end should not be like that. There should be something called foreground and background. Your program should be always like that, foreground and background. What you see is something foreground. What is happening is something in the background, which is not visible to you. Okay. Then it is possible to achieve this. Understood? Okay. So what it indicates is that when you write the programs, right, there are certain things which we mention as in the foreground loops, but there are certain things which also happens in the background loops. Okay. Why it is important that we are not putting entire code in one single loop is, like I was telling, that we are not talking about multi-processor, multi-core CPUs. Okay, when we're talking about this single board computers or operating system and all, we are not talking about I have so many CPUs or I have so many cores like that. That happens only in maybe like i3, i5, i7, that high-end CPUs. But there also, i3, i5, i7, those CPUs, first of all, they are having 8 cores, 16 cores like that. In one CPU, 8 CPUs are there. One IC, 8 CPUs are there. Okay, multi-core. And how much amount of power they are consuming? Above 50 watts of power. Okay, 50 watts of power. It's a huge. Okay. That's the reason those CPUs we cannot use in our day-to-day applications. There is a big heat sink, big cooling fan, and so on. But where is the heat sink and cooling fan here? Nothing. And it's so thin. It's not a big tower. However, in computer, CPU itself is a multi-story building. There is a big heat sink and cooling fan on top. I will show you. So it is like that. But here it's not possible. We always want no heat. Okay, in your computer, just touch the heat sink of your computer, your skin will come out. It is at least it is around 80 degrees centigrade. That
body of the heat sink which is there in your computer is because 50 watts. हम लोग ये जो एलईडी ये जो ट्यूबलाइट देख रहे हैं ये 10 वैट्स है. ओके, इमेजिन ये इसको भी आप टच किया तो नो वो हीट सिंक गर्म रहता है, उसका 5 टाइम्स है द सीपीयू व्हिच इज वर्किंग देयर. सो मतलब आप कुछ डोसा भी बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कुछ फ्राई कर सकते हैं. इतना गर्म रहता है, इतना पावर इट इज डिसिपेटिंग. सो दैट्स द रीजन वो वर्क स्टेशन टाइप है, दे आर मल्टी कोर सीपीयूज व्हिच वी कैन नॉट यूज इन आवर these products. So undoubtedly in this entire journey of when we are saying single board computers, keep it in mind that we have only one CPU, one core, not multi-core. Multi-core happens only in that mainframes workstations like that. Even the operating system also there, it is like a distributed operating system type. It will assign the task to various CPUs like that. But it's not here. We are always saying that I have only one CPU, okay, one core. So in the context of one CPU, one core, okay, one core means I have only one functional unit where I can only perform addition, subtraction, multiplication, division, square. Only one I can do at a time, not many. So if that is the case, then how can I achieve this multiple tasks? I have multiple tasks. I want to do this also, I want to do this also, I want to do this also, I want to do this. This challenge is there even in computer also. This multi-core concept came only from i3. But otherwise last 30 years, multi-core are not there in computer. There is only one core. Even in one core was there in computer, still computer was handling multiple tasks, no? Computer was always having keyboard, display, mouse, hard disk, printer, internet, all the last 10-15 years, it is handling all these things. So multiple tasks are always there in computer, even it was having a single CPU, single core. So that's why I'm saying even in computer also, computer perspective also, if you understand that as if I have only one computational unit, then how will you achieve this kind of a multitasking priorities? Okay, that's why I'm saying when you develop your code, the code should be in this form. That is foreground, background, something is running in the foreground, something is running in the background. And as and when the deadline, task demands, it should be given the priority. So every task has its own deadlines. So we should meet the deadlines. Okay. Say for example, you have a four-wheeler. Four-wheeler is also having computer box. There is a CPU inside that. For that matter, almost every product is having such kind of a things. Or let us take only air conditioner. Let's say in air conditioner, what you have, there is a display is there, and there is a compressor is there, there is a temperature sensor is there, right? And there is a infrared, you can operate the AC through infrared input also. And nowadays, Wi-Fi is also coming. So through Wi-Fi also you can communicate. Now imagine there is only one CPU, right? There is even mobile having one CPU. How can it have many CPUs? There is only CPU. So when one CPU is there, how many things it has to handle? It has to display on this thing. It has to accept your infrared remote. It accept your Wi-Fi remote, and it should switch on or switch off the compressor. And there is a temperature sensor inside. It should measure the temperature. और वो भी उसका कुछ फैन घूमता रहता है, उसको ब्लोवर को भी उसको भी घुमाना है. So many 5-6 टास्क तो ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, बट CPU तो एक ही है. Now here how it works, अब उसको तो डिवाइड करना पड़ेगा एयर कंडीशनर के अंदर. चलो वाईफाई एक टास्क, इंफ्रारेड दूसरा टास्क, and what I said, temperature sensing another task,
एंड कंप्रेसर को ऑन ऑफ करना अनदर टास्क, फैन को ऑन ऑफ करना अनदर टास्क, इतने सारे टास्क है, सभी अलग अलग है, क्योंकि आपको लग रहा है ना सब साथ में ही चल रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, व्हेन आई एम सेटिंग सम वैल्यू और उधर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या उधर कंप्रेसर बंद हो गया, उधर फैन नहीं घूम, ऐसा नहीं होता है ना, आपको लग रहा है कि सभी साथ में ही चल रहा है, राइट। लाइक कार के अंदर आप ऐसा लग रहा है कि आपका कार को ब्रेक्स लगा तो इंजन बंद हो गया, या म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया, या कुछ एसी बंद हो गया, ऐसा नहीं है ना। सब आपको लग रहा है यार मैं ये भी सुन रहा हूँ, ये भी सुन रहा हूँ, या कभी हम लोग एक्सेलरेटर भी दबाते, ब्रेक्स भी लगाते, या गियर भी चेंज करते, ऐसा हम सब करते हैं ना। वी नेवर फील दैट कि एक ही टास्क हो रहा है, सभी हो रहा है, बट हाउएवर एक ही सीपीयू है अंदर, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर बॉक्स, देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बॉक्स इज देयर. So that is the beauty of operating system, or I was telling the developing a multitasking environment. आपके पास हर प्रोडक्ट में, हर ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में, इंक्लूडिंग few years back कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, सभी में एक ही सीपीयू है, बट लेकिन द यूजर इज फीलिंग एज इफ वो मल्टीपल टास्क कर रहा है, लेकिन सीपीयू तो एक ही है, और सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूं तो बस मैं यही काम कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, वन एट ए टाइम, बिकॉज आई हैव ओनली वन computational unit. That's the beauty of what I'm saying, multitasking environment, how to create in a single CPU. Okay, so undoubtedly whatever we are coding, whatever is programs we write, these are all sequential in nature, because CPU तो एक ही है आपके पास. But फिर भी, in spite of you have only one single CPU, one single core, फिर भी आप साइमल्टेनियसिटी अचीव कर सकते, कॉन्करेंसी आप अचीव कर सकते हो. हाउ दिस इज पॉसिबल इन ए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यहाँ हम कैसा अचीव कर सकते हैं सारे, या ये प्रोडक्ट्स में ये सब, हाउ इट इज पॉसिबल, राइट. दैट्स द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग इज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है यार ये फोरग्राउंड में ये काम हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है बैकग्राउंड में और भी काफी सारे काम हो रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड में या जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, आप सीपीयू तो एक ही है. अंडरस्टूड. सो दैट्स द रीजन वेयर आई एम सेइंग वी कैन अचीव दिस थिंग ऑफ ए पैरेललिज्म, कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि भले ही सीपीयू एक है, बट यू हैव सो मेनी पेरिफेरल्स inside the CPU itself, inside the system itself, there are so many peripherals. Peripheral means slave. CPU is the master, and there are so many slaves are connected to the master. CPU means brain, but however, there are so many, I have inputs, sensors, controls, whatever. And what is the role of a slave? Dedicated function, उतना ही काम करेगा. What is the role of the brain? To give the command. पेरिफेरल अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, अपने आप काम करना शुरू नहीं करेगा. लाइक यू नो ना, माइंड में कुछ ब्लॉक्स हो, नो, इफ देयर इज एनी ब्लड क्लॉट्स है वगैरह कुछ है, नो, देन देयर इज अ पैरालिसिस. पैरालिसिस मींस फिर कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी काम नहीं करेगा. इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ से सिग्नल नहीं गया समझो, where then it becomes non-functional. Same thing happens here. The brain is undoubtedly, there's only one brain here, only one CPU. We have so many peripherals, so the brain can give the commands to the peripherals. But however, अगर brain से command नहीं गया, initialize नहीं किया, तो peripheral कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे बैठा रहेगा. तो अपना CPU के अंदर there are so many peripherals are there. When to use, how to use is the role of the CPU. Use करना CPU का काम है. That's why I'm saying कि ये जो multitasking, priorities, deadlines, ये सब एक बार मैंने कर दिया फोरग्राउंड में, चलो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा डेडलाइन है, ऐसा एक बार मैं कर देता हूँ,
बिकॉज आई एम द मास्टर, मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं बैठा रहूंगा। फिर मेरा स्लेव तो क्या कर रहा है, मास्टर ने कमांड दिया टाइम गिनने के लिए, टाइम हो गया, चलो मुझे एक काम करना है, एक काम करना है, इसका काम ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम है लेट्स से फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को हैंडल करना, वो उसने उतना ही जानता है, इसको माउस को हैंडल करना वो उतना ही जानता है, इसको हार्ड डिस्क को हैंडल उतना ही जानता है, ये माउस का काम नहीं कर सकते, इसका काम, बिकॉज दे आर डेडिकेटेड इन नेचर पेरिफेरल्स, यू कैन नॉट इंटरचेंज। सो फिर आपको वो सीपीयू के अंदर हाउ मेनी पेरिफेरल्स यू आर हैविंग, उसका पावरफुलनेस कितना पावरफुल है, अकॉर्डिंगली आपका ये जो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है वो बनता है उसका। अंडरस्टूड? सो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज आई हैव ओनली वन प्रोग्राम, CPU can execute only one instruction at a time. We are not talking about multi-core systems, multi-processor systems that happens only in workstations. We are still talking about single core, single CPU. However, I have many peripherals. It is rich in peripherals. That is the major difference between a microprocessor and a microcontroller. What we are having single board computer means मुझे सब कुछ CPU के अंदर ही चाहिए. That's why it is called single board, or you can say single chip. कंप्यूटर में क्या है, सिंगल चिप में नहीं आता है, मेमोरी अलग चिप, डिस्प्ले अलग चिप, मल्टीमीडिया अलग चिप, एवरीथिंग इज डिफरेंट चिप्स, और चॉइस भी रहते हैं, बड़ा हो कम करो और किसी कंपनी का ले लो ऐसा। लेकिन इधर एक चिप मैंने ले लिया, जो भी दिया आपको यूज करना पड़ेगा। आपको चिप ही पसंद नहीं है, चलो आप नया चिप ले लो, नया ब्रेन ले लो, उसके अंदर जो, इसलिए आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ जो सीपीयूज जो है थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स, मोर देन 25-30 कंपनीज है जो सीपीयूज बनाते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बने वाला 2 या 3 ही कंपनी है, उसमें भी 3 प्रोडक्ट्स है, i3 i5 i7, बस इससे ज्यादा तो चॉइस है, यहाँ थाउजेंड्स में। सो थाउजेंड्स में आप क्या चुन रहे हो कि मुझे कितना पावरफुल कंप्यूटेशनल यूनिट चाहिए, हाउ मेनी पेरिफेरल्स आर रिक्वायर्ड, कितना पावरफुल पेरिफेरल्स है, उसके अंदर कितना मेमोरी है, कितना बिट्स का है, कितना स्पीड का है, कितना रेजोल्यूशन है, ऐसा इट हैज इट्स ओन पैरामीटर्स। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दो वी आर हैविंग ए सिंगल चिप बट स्टिल आई कैन डू द थिंग्स साइमल्टेनियसली, हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। सो लाइक सेम थिंग इज हैपनिंग इन एयर कंडीशनर, भले सीपीयू एक है, बट जैसे आप एसी को ऑन करें, व्हेन यू स्विच ऑन द एसी, वो क्या कर रहा है, वो वाईफाई को इनिशियलाइज करके रख देता है, देयर इज अ पेरिफेरल फॉर वाईफाई एंड देयर इज अ सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, उसको इनिशियलाइज करके रखे, एंड सिमिलरली वो मोटर कंट्रोल उसका लाइक दैट, सो दे टेक्स केयर ऑफ दैट, दे आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग। हाउएवर व्हेनेवर डेडलाइन वो कुछ सेट करना है, फिर देन दे टेक द हेल्प ऑफ द सीपीयू, ठीक है भाई मेरा काम हो गया, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, गिव मी द कमांड, सो दे इन्फॉर्म, राइट, दैट इज हाउ centralized, there is only one CPU but all of them are coordinating, communicating to the CPU. Understood? Now इसमें भले ही इतने सारे पेरिफेरल्स है, लेकिन इसमें कभी कभी झगड़ा भी होता है। हाँ, वेरी गुड, प्रायोरिटी। अब मेरे सामने 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 एट ए टाइम बात किया तो आई कैन आंसर, अब सडनली 10-15 लोग चालू हो गए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन आई आंसर देम, सो इट बिकम्स ए न्यू नॉइस, नो। सो दैट मीन्स वी शुड अडॉप्ट सम पॉलिसी कि चलो अभी 10 लोग है ना भाई, आपको सबको 1-1 मिनट देता हूँ, आपका होने के बाद नेक्स्ट मिनट, मतलब आपको फिर पूरा ये 10 लोगों का होने के बाद ही आपको चॉइस है, तब तक आपका राउंड हो गया ना, देन यू शुड वेट, देन नेक्स्ट, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें बीच में किसी को ना बाथरूम जाना है सर जल्दी तो फिर उसका इम्पोर्टेंट है ना, भाई चलो तुम रुको थोड़ा, क्या है व्हाटएवर, सो देयर इज सम इमरजेंसी। सो इसीलिए ये जो पॉलिसी जो है 2-3 लोगों का सडनली साइमल्टेनियसली करना है, तो एक रूल नहीं चलता है। अगर एक रूल में किया तो मैं जैसे बताया, सिंपलेस्ट मेथड क्या है, सबको इक्वल टाइम देता हूँ,
ठीक है, तुमको एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार आपका वापस सबका होने के बाद वापस होगा. दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द थिंग्स. लेकिन लाइफ में, जिंदगी में ये मेथड सब जगह नहीं चलता. ठीक है, क्योंकि मैं आपसे यहाँ गया, हो सकता है कि यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फिर मुझे वो पॉलिसी नहीं, मैं फॉलो नहीं कर सकता. हाउ टू एड्रेस दैट लाइक दैट. और ये भी तो हो सकता है कि आप क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, सबको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उसको टाइम दे रहा हूँ. ये भी कभी गलत होता है. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी सबको ही प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उतना ही टाइम स्लाइस दे रहा हूँ. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लेकिन इसको 2 मिनट चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा हूँ, मुझे एक 1 मिनट ही मिलेगा. तो ये भी गलत हो रहा है. तो लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एक रूल जो है सब जगह नहीं चलता. When I am saying multitasking, when I am saying priorities, सब जगह एक ही मेथड नहीं चलते. दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग. आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे, आप ड्रोन बना रहे क्या, या कोई सैटेलाइट बना रहे क्या, और क्या बना रहे, सबका जो प्रायोरिटीज जो है सेम नहीं रहेगा. ओके, लाइक एसी में, एसी पे चलो आपने तय किया और डिस्प्ले करना है कितना टेम्परेचर, इंफ्रारेड से रिसीव करना है, वाईफाई से करना है, कंप्रेसर को ऑन करना है. ठीक है, ये सब टास्क है. ये हो गया एक नॉर्मल चीज. तो आपको दो चीज साइमल्टेनियसली आ गया समझो. ठीक है, कब होता है, कब होता है, हो सकता है कि अंदर कुछ सडनली शॉर्ट सर्क्यूट हो गया, कुछ जाम हो गया, मोटर होता है ना, कभी जल जाता है वगैरह, इट्स पॉसिबल. तो उस टाइम क्या होना चाहिए, उस टाइम भी डिस्प्ले होना चाहिए, उस टाइम भी मोटर ऑन करना चाहिए, नहीं कर सकता. जब कुछ हाईएस्ट प्रायोरिटी कोई हो रहा है समझो, उस टाइम इट शुड नॉट डू द वे इट नॉर्मल इट इज डूइंग. इट शुड लीव ऑल दोस टास्क. मुझे ये चीज आ गया अभी, नाउ मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना मतलब क्या, शट डाउन, एसी को बंद कर दो बस. इमरजेंसी मीन्स व्हाट, शट डाउन द थिंग. आप कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा, नॉर्मली व्हेन यू हैंडल द कंप्यूटर, आपको मालूम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स. जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ, माउस भी चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रहा है, कीबोर्ड भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, इंटरनेट भी हो रहा है. कभी कभी आपने देखा होगा सडनली ब्लू स्क्रीन आ जाता है और बंद हो जाता है. ठीक है, या सडनली आपको बिना पूछे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है. ठीक है, दो रीजन है. ब्लू स्क्रीन जब आता है, आपने कहीं तो देखा होगा, वो क्या होता है, एक एरर आता है सेइंग दैट सेगमेंटेशन और ओवरफ्लो और मेमोरी एरर, ऐसा कुछ ऐसा कुछ चीजें रहते हैं. तब आपको स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, कुछ तो एरर डिस्प्ले करेगा, फिर वो रीबूट करेगा. आपको पूछेगा भी नहीं, वो आपका परमिशन तक नहीं पूछेगा. एटलीस्ट आप जब शट डाउन कर रहे हैं तो आपको पूछता है कि भाई मैं क्लोज करूं कि नहीं. लेकिन जब सिस्टम एरर आता है, सिस्टम एरर, तब वो पूछता भी नहीं है, एक थ्रो करता है, डाउन हो जाता है. ठीक है, और दूसरा चीज अपने आप डाउन होता है कभी कभी, वो भी आपने देखा होगा, ठकट करके बंद होता है. आप चालू कर रहे हैं बट बंद होता है. ये दो रीजन क्या है, नेचुरली सम टास्क है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आपको पूछ भी नहीं रहा है, आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपका परमिशन भी नहीं ले रहा है, लेकिन वो बंद कर देता है. मतलब सो अनडाउटेड इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, मास्क नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिस्टम का टास्क है. वो क्या रीजन है, वो दो रीजन. एक जो है मेमोरी एरर. मेमोरी एरर मीन्स आपके पास इतना सारे मेमोरी है, 4 GB 8 GB जो भी है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो मेमोरी में आप CPU इज ट्राइंग टू राइट, बट लेकिन वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, मतलब मेमोरी करप्ट हो गया. ठीक है, लेकिन आपको लगता है यार मेरे पास इतना मेमोरी है, तो इतना खराब हो गया तो क्या हो गया, आपको लगता है ना. 8 GB है, तो एक लोकेशन में इट इज ट्राइंग टू राइट, वो मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ, बाकी जगह यूज करो ना. ठीक है, शट डाउन क्यों करने का,
शट डाउन इसलिए करने का बिकॉज कंप्यूटर इज नॉट, I mean, you cannot make a computer unreliable system. ठीक है, आपने क्या किया, एक सैलरी शीट बनाया, चलो भाई इसका पगार अभी मुझे देना है 1 लाख रुपया मुझे देना है, तो आपने एंटर किया और चलो मैं दूसरा टास्क में जाता हूँ, तो वो मेमोरी में खाली वो एक बिट खराब था, वो 1 का जगह 0 हो गया। अपने 1 लाख में एक MSB में 1 होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बिट ओके ना। तो बाकी काम करो ना, उसको छोड़ दो, चलेगा नहीं चलेगा। तो हमको ऐसा कंप्यूटर नहीं चाहिए, एक बिट भी खराब है तो पूरा कंप्यूटर खराब है। ऐसा मत कहना एक बिट चलेगा ना, क्या है एक बिट नहीं चलेगा। so we do not want any system where मेमोरी के अंदर एक बिट भी अगर वो मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, डैमेज हो रहा है या कुछ नॉइस आ रहा है, whatever, सिस्टम विल शट डाउन। भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, आई एम अनेबल टू हैंडल, मैं राइट कर रहा हूँ, उसको कैसा पता चलता है कि खराब है, बिकॉज वेन एवर इट राइट्स इट ऑल्सो रीड्स बैक, दैट्स वाई इट विल कम टू नो कि इट इज डैमेज। अदरवाइज आप ब्लाइंडली राइट करके चले जाओ तो हाउ डू यू नो कि वो रीड भी करता है वापस, दैट इट कम्स टू नो दैट नो नो मैंने जो लिखा वो है ही नहीं उधर, मतलब डैमेज है। So that's why your system will shut down. एक ब्लू स्क्रीन आएगा, बोलता है कि this so and so thing has happened. सेकेंड जो है सडनली बंद होता है। सडनली क्यों बंद हो रहा है? बिकॉज CPU is also have the ability for health checking. अपना खुद को चेक करता है वो कंटिन्यूसली, राइट, दैट इज सेल्फ डायग्नोसिस। ठीक है, वो अपना मतलब लाइक ए डॉक्टर खुद अपना बीमारी अपना खुद चेक कर, इट्स लाइक दैट। ये खुद CPU दो इट्स ए ब्रेन, इट इज डूइंग द टास्क फॉर यू, बट अपना भी वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। सो इंटरनली इनसाइड द CPU ऑल्सो कोई सेक्शन खराब है, कोई रजिस्टर खराब है, या टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर सडनली शूट हो रहा है। हो सकता है कि आपको मालूम नहीं, आपका लैपटॉप तो पैक किया हुआ ना, आपको कैसा मालूम अंदर फैन चल रहा है कि नहीं? हो सकता है CPU का फैन बंद हो गया होगा, ठीक है, या पावर सप्लाई, CPU का पावर सप्लाई वो कुछ खराब हो, एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज यू डोंट नो इनसाइड द बॉक्स। बट CPU को पता है ना यार, शूट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, या कुछ सेक्शन एक स्पेसिफिक। आप you notice in semiconductor device it is possible that a specific section of the semiconductor is only damaged, ये भी होता है। don't think that entire IC is damaged, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप प्रैक्टिकल्स में भी देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर एग्जांपल एक IC के अंदर 4 गेट्स है, ये भी तो होता है, एक गेट खराब है 3 चल रहा है, होता है, इट इज पॉसिबल। सो यहाँ भी वैसा ही है, आपके भले ही आपके पास CPU है, पेरिफेरल्स है, ये भी तो होता है कि एक स्पेसिफिक बिट या एक स्पेसिफिक सेक्शन खराब होता है, बट वो अनरिलायबल है ना फिर आपके लिए, बिकॉज यू आर डूइंग दैट फॉर फाइनेंशियल थिंग्स, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर रहे हो। तो दैट इज व्हाई दे मेक श्योर दैट देयर आर सर्टेन टास्क which are highest priority in nature. In routine life you will not come to know, but as and when that happens, कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर सडनली कार का एक्सीडेंट हो गया, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क क्या है? वो बैलून को ओपन करना। इट इज लाइक दैट ना, म्यूजिक नहीं बजाना है, लाइक सिमिलरली अभी कुछ स्मोक डिटेक्ट हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? स्प्रिंकलर को ऑन करना है ना। सो लाइक दैट, सो एवरी एक नॉर्मल टाइम पे यू विल नॉट कम टू नो, बट देर आर सर्टेन थिंग्स इनसाइड द सिस्टम, as and when happens it has. That's why I'm saying that is the beauty of this multitasking environment and prioritizing the task, so that as and when things happens it does that. Okay, fine. So since today's task is about lab practical, what yesterday I was telling is that let us choose some platforms, 3-4 platforms, where in this entire 1 year, whatever is the coding I am doing, they are equally important in practicing. But undoubtedly, if you do master in one language, it won't take much time in learning the other language. At least एक language के ऊपर आप fully command चाहिए। अगर C है तो C,
then quickly C++ आएगा, Java आ जाएगा, like that. But half knowledge is dangerous. फिर आपको सभी जगह हाफ ही रहेगा. एक फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो इन एंड आउट पूरा, फिर बाकी it won't take much time. Understand? Because finally language is what? It's just on the same platform, no? Only language is different. Okay, so we will be using some languages in this course also, but though actually I want to start with embedded C, but since many of you are from first year and so many are the first year, and there are some diploma students also, I thought let us start with in embedded C also. There is a simplified C, उससे भी और भी simplified है, वो है Arduino. ठीक है, Arduino compiler, which is also a C. I'm not talking about Arduino boards. Arduino compiler I'm talking. As a Arduino as a compiler, which is built on C, but वो एक normal C को भी वो लोगों ने further simplify किया. So we'll start with Arduino C, then we'll go to the complex programming of embedded C, and then that Python and Java programming concepts. Okay, so when we are writing Java, Python, ठीक है, please remember they are heavy weights. Generally we don't prefer. Okay, Java, Python, VB, .NET, ये computer में ठीक है, because in computer you have hard disk. In computer you have a multi-core CPU. In computer you have minimum 4 GB, 8 GB, 16 GB memory. So in computer it's okay to use Java, Python, and even sometimes GUI based like MATLABs and such kind of a high-end tools you can use it, you can afford. But the problem here in single board computers is no hard disk, no gigabytes, no multi-core, not in the CPU is not working in gigahertz, absolutely no. So what happens is if you use Java, Python, such kind of a languages, it occupies a lot of resources. वो heavy weight है, वो बोलते हैं ना white elephant है ये languages. They occupy a lot of resources. Okay, you can practically also see, I want to add 2 numbers, बस इतना ही program लिखना है. बस आप यही try करो, I want to add 2 numbers. ये program C पे लिखो, assembly में लिखो, Java में लिखो, Python में लिखो, और देखो what is the size of the file it is creating. It is not same. Okay, compiler to compiler, the size of the output file it creates is not same. और अगर आपको operating system लिखना है, kernel लिखना है, writing the operating system itself is a heavy weight. आपको मालूम है ना कंप्यूटर पे विंडोज कितना स्पेस खा रहा है, कितना हार्ड डिस्क खा रहा है, कितना मेमोरी खा रहा है, और डे बाय डे वो बढ़ते ही जा रहे हो. ठीक है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. जब फॉर एग्जांपल पहला विंडोज कितना था, फ्लॉपी में आता था. विंडोज व्हेन वी हैव परचेज फर्स्ट विंडोज 1995, विंडोज 95 फर्स्ट विंडोज, अब लोग फ्लॉपी से लोड करते. उस टाइम भी हम लोग को ग्राफिक्स था, ठीक है, टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स में चला गया, लेकिन अभी वो जीबी में जा रहा है डे बाय डे. So they are also becoming heavyweight. So writing a kernel is always a heavyweight. We will discuss more about kernel in advanced topics later on. But undoubtedly, ये जो हम जो भी create कर रहे हैं files, हम लोग हमेशा यही कोशिश करना चाहिए, the size of the file should be as small as possible, not as huge as possible. क्योंकि टास्क तो वही है ना. मैंने क्या बताया आपको, मुझे 2 नंबर ऐड करना है, आप ले रहे हो 2 बाइट, ये ले रहे हैं 1 किलोबाइट, ये ले रहे हैं 1 मेगाबाइट, वो ले रहे हैं 1 गीगाबाइट, लेकिन फाइनली सभी लोग वही काम करने वाले, 2 नंबर ऐड करके देने वाले. लेकिन विंडोज क्या करेगा, पहले ऐसा अच्छा
वो पॉपिंग करेगा, ये करेगा, चलो 2 नंबर ऐड करके दी। अब वही टेक्स्ट मोड में क्या करेगा, वो सब फैंसी चीज नहीं रहेगा, आपको 2 नंबर ऐड करके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कॉमेडी आटाना मसाला 12 आना इतना। अब जब पनीर ऑर्डर करोगे होटल पे जाके, वो पनीर तो उसमें फ्लोट रहता है 2 पीस 3 पीस, बाकी साहब वो इतना वो ऑनियन टमाटा वो सब इतना डाल के देगा। सो लाइक दैट इज ऑलवेज। यहाँ था हम लोग को एक आधा एसी ऑन करना था, एक आधा चीज को कंट्रोल करना था, लेकिन उसके लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखोगे फिर वो खुद ही बहुत बड़ा हेवी वेट है, हाथी है, फिर उसके बाद वो एसी ऑन करेगा। So that's why it is always we should try to optimize the code. इसके लिए आपको बहुत डिमांड है मार्केट पे, राइट? Writing the code is one thing. When you write a program, that is one thing. Okay, that's a functional verification. But उस चीज को ऑप्टिमाइज्ड करके दिखाना जो है, उसमें lot of money is involved. पैसा, बहुत पैसा मिलेगा उसमें, क्योंकि आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। आपका कोड बड़ा होने से प्रॉब्लम क्या होता है, एक दो मेमोरी चला गया आपका अननेसेसरली, फिर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू टाइम चला गया दो, और उसको चलाने के लिए पावर चाहिए, बैटरी का लाइफ, आप ज्यादा पावर खींच रहे हो, हीट डिसिपेट कर रहे हो, तीसरा हो गया, कॉस्ट बढ़ा दिया, साइज बढ़ गया, ये सब बढ़ने से। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स आप क्या कर रहे हो, भले ही आपने लिखा है, बट लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड। अगर वही चीज मैंने ऑप्टिमाइज करके दिया, समझो मुझे और कितना जगह उसका एडवांटेज मिलेगा। सो इट्स नॉट ओनली implementing the things, it is also important that how the best code I have done. That's why I was keep on saying, what do you mean by industrial coding? Industrial coding means, for example, ठीक है, हम लोग करने वाले ये सारे चीज, ये मोस्ट पॉपुलर थिंग है, ठीक है। मैं आपको 8 LEDs देता हूँ, यू नो LED, राइट? सो मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल वही रहेगा, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्विच ऑन द LED, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम इज एक LED ऑन करो, तो आप क्या लिखने वाले हैं? सो यू विल राइट दैट सेट द बिट, क्लियर द बिट, ऐसा यू विल राइट समथिंग इन बिटवीन सम डिले, तो ये लिखेगा। फिर मैं नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, चलो भाई मैं आपको 8 LEDs दिया, अभी नाउ यू राइट ऑल 8 LEDs के लिए, तो ये क्या लिखेगा, सेट क्लियर डिले। उसी इंस्ट्रक्शन को 10 बार कॉपी पेस्ट करेगा ना, हर आदमी ऐसे ही करने वाला है ना, ऑन ऑफ डिले। फिर आप क्या करेगा, कॉपी पेस्ट, देन इसका ऑन ऑफ डिले, फिर वापस कॉपी पेस्ट, ऑन ऑफ डिले, आप वापस कॉपी, सब यही करने वाला है क्या? नहीं ना, तब क्या करने वाले? वेरी गुड। सो यू विल राइट ए काउंटर 0 to 7 8 times, देन 2 ही इंस्ट्रक्शन है, बट मैं 8 बार कॉल करने वाला, तो उससे क्या हो गया, आपका बच स्पेस कम हो गया ना आपका, इतना कॉपी करने की जरूरत नहीं लगता। I hope you can understand what I'm saying. So that's why when we go for operating system and all, they are white elephants. And when we go for compilers like Python, Java and all, they're also white elephants. They occupies a lot of space. However, why we are going for Python, Java वगैरह, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि when we use such kind of a compilers, then this ये जो user friendliness, more GUIs, नो, वो सभी बहुत ही easy है। अगर वही चीज आप C पे लिखने के लिए जाओगे, आपको जान चला जाएगा। एक ग्राफ बना के दिखाओ C पे, तो इतना, उधर हो सकता है कि एक ही फंक्शन है, एक लाइब्रेरी है, कॉल दैट द ग्राफ प्लॉट इज डन, वेरी सिंपल, बिकॉज उतना वो लोग ने ऑलरेडी टूल बॉक्सेस मीन्स
लाइब्रेरीज बना के रखा है, खाली आपको इसलिए तो दे आर बिकमिंग पॉपुलर, easy to use, but heavy weight. So when do we use such kind of a compilers? When I have more memory, high computational units. That's why I am saying कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है तो ये 4 बिट 8 बिट सीपीयू में कोई नहीं लिखता है, एटलीस्ट 16 बिट के बाद. So that's why in this course I said, when we use for operating system and all, make sure we are using at least 32-bit CPU in the system. तब जाके हम लोग ये Python, Java या OS वगैरह हम लिखेंगे. Not on a conventional normal ये CPU में operating system नहीं लिख सकते, because this is a 8-bit CPU. But however, most of the products में यही होता है, ठीक है, क्योंकि वहां हम लोग को इतना ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत नहीं, लाइक एलिवेटर्स, माइक्रोवेव ओवेन्स, लिफ्ट, वहां दिस इज मोर देन एनफ. एसी में दिस इज मोर देन एनफ. अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, do you really require that Python, Java or operating system or not? Which kind of applications requires? Accordingly, we have to carefully choose. It's not that everywhere it is required, absolutely, because they're heavyweight in nature. Is that clear? Okay. So how that our today, whatever I'm going to demonstrate after this, how our laboratory practices looks like. What happens is, when we do anything, definitely we will be doing those things on computer only. Whatever we write, type, everything we are doing on computer only, right? Now also we use the computer editor, computer compiler only. We type there only. Or there are certain softwares where they can also simulate. Is also possible in computer. But whatever we are doing in computer is not real. Okay, it is not real. It's only simulation. Or we are only writing the programs. That's all. But finally in SBC, what we are supposed to do is, we are supposed to transfer the programs from the computer to a boards like this. We are not supposed to execute on the computer. You can write the program, you save the program, you simulate the program, that is okay. But you cannot run the program in real time in computer. Because whatever we are doing, that CPU is not there in computer. It is altogether different. That CPU is not manufactured by Intel. They are different companies. They are not there in the computer. So you cannot run them in real time, what is called emulation in computer. You can only do the simulation. What is by simulation and emulation? Simulation means anything you can do simulate in computer. Even mechanical guy also, for example, four-wheeler, the behavior, he can simulate. A civil guy, how the building looks like, he can simulate. Anybody can simulate. Medicine, the function of the body, they can simulate. Computer can be used for any simulation. That's okay. That is simulation. So similarly, the working of this CPU, I can simulate. Anybody can model and simulate the behavior, but that's simulation. What do you mean by emulation? Emulation means whatever you have written, that should be executed on that specific CPU only. वो कंप्यूटर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सीपीयू है ही नहीं कंप्यूटर पे आपको रन करने के. सो इन रियल टाइम पे आपका प्रोग्राम कंप्यूटर पे नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, खाली आपको बिहेवियर दिखा रहा है. ओके, सो इफ यू वांट टू डू एमुलेशन, then you require this kind of a environment. That is, you have to plug it, the target, whatever is the board, your SBC, your computer, transfer it, your whatever you have written the program, load it into the memory, and then they will start executing. Okay, what is the difference? When you transfer it here on the board, okay, when you are execute the program on the board, whatever is the variables, whatever is your program is running,
generating the variables, numbers, data types. These are all in real time. So I was keep on saying, what in the real time, real time, real time. So it happens in real time, natural time. That's why you can connect your CRO, whatever, all test and measuring equipment, and you can see them. For example, आपने एक प्रोग्राम लिखा, ये म्यूजिक प्ले करना है, ठीक है, whatever, something. So when you write that program in computer, what you can do, you can only plot that waveform on the computer screen. That is only simulation. No, you can see, oh, my music looks like this. No, I can only plot it. वो हम भी हर रोज करते हैं ना, you write C program, something like draw some, generate something, that's okay. But लेकिन वो वेव फॉर्म को मुझे सचमुच में सुनना है, तो फिर आपको हार्डवेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. देन आप कंप्यूटर में क्या देख रहे थे, नंबर्स को वेव फॉर्म पे प्लॉट कर रहे थे, लेकिन मुझे क्या करना है, नंबर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. जब तक वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आप कन्वर्ट नहीं करोगे, स्पीकर में कैसा आएगा, हाउ इट विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वेव्स, वो करंट फॉर्म पे आना पड़ेगा ना, उसके लिए डिवाइस तो चाहिए. सो दैट इज वाई हम लोग यही गलती करते हैं. हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खाली कंप्यूटर में हमारा सारे प्रोजेक्ट्स या व्हाटएवर हम खाली सिमुलेट करके छोड़ देते हैं. दैट मीन्स आपने एक्चुअली किसी प्रोडक्ट बनाई ही नहीं है, आपने खाली 50% काम ही किया. 50% ऑफ द काम आपका हुआ नहीं है, क्योंकि आपने उसको रियल फॉर्म पे कन्वर्ट ही नहीं किया. जब रियल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो चलता है नहीं चलता है. चलो फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर आपको ऑन करना है, कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम लिखा, तो आपको वहां क्या पता चलेगा, कुछ तो वो दिखाएगा PWM वेव फॉर्म ऐसा ऐसा. तो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको एक मोटर देता हूँ आपको, चलो उसको चला के दिखाओ. ओके, फिर आपको जान पे आ जाएगा कि वो सिग्नल अगर इस पे दिया, तो जब वो वेव फॉर्म जनरेट हो रहा है, वो वेव फॉर्म मोटर को कनेक्ट किया, हो सकता है मोटर चलेगा नहीं चलेगा, नहीं तो बोर्ड जल जाएगा, काफी सारे होते हैं आपको उस टाइम. एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि वो इतना, आई मीन व्हाट वी थिंक बट व्हाट हैपेंस इज नॉट सेम. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाट वी डू ऑन कंप्यूटर इज ओनली 50% ऑफ द वर्क. बट दुनिया में हर चीज जो है ओनली सिमुलेशन से खत्म नहीं होता है. फाइनली इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, कोई भी फील्ड में हो, आप कोई डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आप बताएंगे भाई मेरा ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फिर एक्चुअली डॉक्टर के पास भी जाने का भी जरूरत क्या है. आई एम सेइंग, आपका कंप्यूटर के सामने बैठो, कंप्यूटर का बोलो यार मुझे बुखार है, ऐसा ऐसा है, वो कुछ तो दवाई देगा ना. फिर ये MBBS डॉक्टर्स का क्या जरूरत है हम लोग, अंडरस्टैंड, जरूरत ही नहीं है. फिर ये इंजीनियर्स का जरूरत नहीं है, वही तो AI का चल रहा है ना चार्ट बोर्ड. भाई फ्यूचर में इंजीनियर्स का ही जरूरत नहीं. बट ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा. एक टाइम था व्हेन ऑनलाइन लेक्चर्स वर, नो, बहुत बड़ा कंपनीज ने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किया था कोविड का पहले, ठीक है, अरे ऑनलाइन टीचिंग ऐसा है वैसा है, मल्टीमीडिया है, ऐसा है ऐसा, नो, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा है. काफी लोग पैसा इन्वेस्ट किया, तो बहुत कॉस्टली थिंग ना ये जो ये बिजनेस. तो लोगों को लग रहा है कि इसका बहुत एडवांटेज है, वैसा वैसा है. तो फिर एक बार कोविड आ गया, फिर सब लोग ऑनलाइन पे चला है. अब सब लोग बोलते यार ऑनलाइन में मुझे बैठना नहीं है हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन. और हम लोग एंटायर, नॉट ओनली इंडिया ना, एंटायर वर्ल्ड का ये जो पॉपुलेशन का जो बिहेवियर जो है, स्टूडेंट्स का लर्निंग स्किल्स या एटीट्यूड, इतना सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो गया. अभी लोग सामने से मुश्किल से बैठने के लिए भी तकलीफ हो रहा था उसको, क्योंकि उसको सोने का सुनने का आदत है या खाते वक्त सुनने का आदत है, ऐसा कुछ तो हो गया ये नहीं ये कोविड पे. अभी यू कैन नॉट सिट, वो इतना प्रॉब्लम्स शुरू हो गए. एंड दिट इज अफेक्टेड इन इंडस्ट्री आल्सो. पहले ऐसा था कि बिफोर कोविड वो कुछ कंपनीज में हुआ करता था कि भाई वर्क फ्रॉम होम, ठीक है भाई, सो यू नीड नॉट कम टू कंपनी, आप घर पे बैठ के काम करो.
ऐसा कोई only 2-3 companies used to do that, Google and some Amazon something company. तो कोविड के वजह से मजबूरी में क्या हुआ, काफी सारे कंपनीज ने ऐसे ही सब शुरू किया। अब ठीक है चला, लेकिन अभी बोलता है कि यार ये लोग नहीं आ रहे, बोलता आओ, बोलता नहीं आ रहा, फिर बोला कंपनी भाई हम लोग को कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो आओ, दे आर फोर्सिंग बिकॉज दे अंडरस्टूड कि हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती। ओके, see, coding, company doesn't mean that it's only sitting and coding, no. There are so many things which happens in the interactions, discussions, and so many. Physically also, there are so many things happens. It's okay. What I'm saying is that only simulation से कोई product नहीं बनता है unless you built the thing and then जैसा अभी bridge है, जैसा तो अभी बिहार में वो गिर गया वो bridge, तो something. When you build, then the reality may be something else, where जैसा अपना अंधेरी ब्रिज पता नहीं कब बनेगा, so and so on. You have anybody has presentations of today TPO ka? How many of you have? So tell me when it is there. Actually, it has started. Okay, so understood. The difference, what we are saying is that it's not just simulation. What I am saying is emulation. And when we emulate the things, okay, whatever is the output file it creates, it is not .com file or .exe files. जब हम लोग कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं अभी कंप्यूटर के अंदर, whatever is the programs of VB, Java, .NET, any compiler when you are using in computer, final output file it creates is either .exe or .com. However, अपना केस में SBC में it is not exe or com file. It is an interesting topic, please understand. Okay. Any compiler you use in computer, they generate always .exe or .com file. But अपना केस में अपना compiler, though we use it in computer only, AB compilers, but their output file is not .exe, .com file. उनका आउटपुट फाइल है .hexa फाइल, HEX, और .bin, .rom, ऐसा कुछ अलग है, not exe, not com. What is the major difference between a computer programs which generates output files of exe com versus the SBCs where they generate .com file, .hexa files? What's the difference? No, agreed. I am saying when it generates the output file, कंप्यूटर में भी CPU है, ये भी CPU है, लेकिन फाइल स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर का exe और com है, और अपना जो है ना .hexa फाइल. No, agreed. I am talking about file structure. अरे भाई अभी भी वही बता रहा हूँ ना. अब अभी फॉर एग्जांपल आप i3 यूज करो, आप पेंटियम यूज करो, ठीक है, आप i5 यूज करो, बट सभी में .exe, .com फाइल ही रहता है. बट हाउएवर SBC के लिए जो फाइल बनता है ना, वो आई एम सेइंग आप नेट पे भी आप स्टडी करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .exe com file versus .hexa file. आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर. CPU तो सब जगह अलग ही है, i3 अलग है, i5 अलग है, i7 अलग है, वो मैक का अलग है, मोटरोला का अलग है, सबका अलग ही है. Agreed, I agreed, but still I am saying computer is not simulating. exe com file जो है, आप टर्बो सी पे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, उधर वो सिमुलेट नहीं हो रहा है, सचमुच में एमुलेशन हो रहा है.
वो फाइल्स खाली अपना फाइल सिमुलेट हो रहा है, एसबीसी सिमुलेट हो रहा है कंप्यूटर पे। अगर आपका जो वीबी डॉट नेट जो वो सिमुलेशन नहीं, वो इमुलेशन ही है, क्योंकि उसका सीपीयू ऑलरेडी उसके अंदर है, इंटेल है। दैट इज नॉट सिमुलेशन, दैट इज एमुलेशन। नो नो, वो भी नहीं। Okay, so this is a question. I suggest at least you can spend substantial time in studying that. What happens when you compile a program in computer? What happens? Whatever is the output file it creates, that file in computer, how it is executed. Understood? And other than computer, whatever is the output files we create for other CPUs, how that is get it executed. It's a really interesting topic, but I will give hints. You study it, and if you have any doubts, we'll discuss again. exe files. They are maybe linked to the libraries, but the bin file is completely independent. It has no library. No. Once the output file is created, there is nothing like linking. Even in hexa file, also linking is already done. Okay, I think I will go back to my yesterday's slides. Okay, do you recognize this? What I was saying? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर हो, असेंबलर हो, लिंकिंग तो वन शॉट में होता ही है। फाइनली एक ही फाइल बनेगा आपको। इवन इन कंप्यूटर आल्सो, अब जो भी लिंक करना है सब एक ही साथ होता है, बार बार नहीं होगा, एक ही बार फाइल बनेगा। लेकिन इसी स्लाइड में आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू माय क्वेश्चन। कंप्यूटर पे ये क्या लिखा है? एग्जीक्यूटेबल इमेज बनता है। हाउएवर यहाँ जो भी बनता है, ये यहाँ कोई बूट प्रोसेस नहीं है। वहां आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है, ये बूट प्रोसेस के बाद इसको नाम क्या है? लोडर। इधर लोडर है ना, इधर लोडर, इधर लोकेटर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोडर एंड लोकेटर? That's a answer, or I will say, yesterday also we have discussed these concepts that computer में पहले operating system is loaded. Once the operating system is loaded, then only application program is loaded. I said yesterday also. Again, I said that, however, in other than computer, operating system and application program are not two different things. यहाँ सब कुछ एक ही फाइल बनता है और एक ही बार लोड होगा। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कंप्यूटर पे, आपका कंप्यूटर में 4 GB है, आपका कंप्यूटर में 8 GB है, आपका कंप्यूटर में 16 GB है। ओके, सो व्हेन आई एम टुडे, मैंने एक फाइल बनाया, वो इसमें भी एग्जीक्यूट होता है, इसमें भी एग्जीक्यूट होता है, इसमें भी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसका मेमोरी कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, आपको तो और भी ज्यादा है। तो आपका प्रोग्राम फाइनली कहाँ लोड हो रहा है? सब जगह लोड हो रहा है। कम है तो भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। हो सकता है आपका प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है जो इस पे नहीं बैठेगा, एक्चुअली नहीं बैठेगा। आपने 16 GB का बनाया, लेकिन 4 GB में, बट फिर भी लोड होता है। इट नेवर सेट कि मैं लोड नहीं होगा, इतना ही कि थोड़ा स्लोली चलेगा, बट चलता तो है। अंडरस्टूड? दैट मीन्स, अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, आज आप जस्ट कंप्यूटर चालू किया, कुछ भी नहीं था, फ्रेश आपने प्रोग्राम लोड किया, लेकिन इसने क्या किया? पहले से कुछ पिक्चर देख रहा था, वो भी मेमोरी पे है, उसने कुछ वराकल लोड किया, वो भी मेमोरी पे है, फिर आपका प्रोग्राम लोड किया, वो भी मेमोरी पे है। तो पहले वो आपका प्रोग्राम कहाँ जाके बैठने वाला है? पहले से मेमोरी पे इतना सारे उसने लोड करके रखा है। अंडरस्टैंड? So what does it mean? It means
कंप्यूटर पे व्हेन यू क्रिएट द फाइल्स, दैट exe फाइल्स एंड com फाइल्स, ठीक है, they are supposed to be loaded part by part based on the situation. इतना मेमोरी है, इतना मेमोरी है, इतना मेमोरी है, कितना प्रोग्राम्स पहले से बैठा हुआ है, मेरे लिए जगह है कि नहीं, चलो थोड़ा ही है, चलो आज इधर लोड करो, आज इधर जगह है, चलो आज इधर लोड करो, आज इधर जगह है, इधर लोड करो. Means dynamically I am relocating the program. Okay, I am dynamically based on अभी इस point of time पे if I am loading the program, वो मुझे कहाँ लोड करना है, मुझे डिसीजन लेना है. OS has to take a call. आज इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ. That is called relocatable files. I am relocating. So exe files and com files are relocatable files. Understood? But अपना केस पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, व्हाट आई टोल्ड यू, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्लीकेशन प्रोग्राम सब मिला के एक ही फाइल बने. ऐसा नहीं कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा फिर एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं. और जो भी कर रहा हूं सब कुछ एक ही फाइल है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इसमें कोई रिलोकेटेबिलिटी नहीं है कि आज इधर है, आज इधर है, आज इधर है, पहले OS आएगा फिर ये, ऐसा कुछ नहीं. जो भी है पहले से तय है. जिस वक्त आपने फाइल बनाया, जिस वक्त आपने प्रोग्राम बनाया, तभी डिसाइडेड है आप कहाँ बैठने वाले हो. आपको ये चेयर दिया, आप एक साल इधर ही बैठो, कल नेक्स्ट टाइम भी आया तो आपको इधर ही बैठना है, एक साल के बाद भी आया तो इधर ही बैठना. आप इधर शिफ्ट नहीं कर सकते. आपको इधर शिफ्ट होना है, वापस मैं रिकम्पाइल करूंगा और 5 लोग एक्स्ट्रा आया भाई, अभी मैं वापस रोल नंबर असाइन कर रहा हूँ, चलो अभी आपको इधर दे दिया, तो आपको हर रोज इधर बैठना है. नहीं चेंज करना है, नया इंस्ट्रक्शन है, वापस कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को, हाँ चलो आज इधर आए, तो फिर आपको हर रोज इधर ही बैठना है. सो एज अनलेस आई मॉडिफाई माई प्रोग्राम, once I compile the program, once I load the program, every time, every day it stores. That is called absolute addressing. Absolute address means पहले से तय है, मैंने प्रोग्राम बनाया, कंपाइल किया, तुमको 8000 एड्रेस दिया, जिंदगी भर तो 8000 पे ही बैठने वाला. I am given. That is the major difference in computer and other than computer. कंप्यूटर में क्या है, 8000 की तो कुछ नहीं है, आपको खुद को मालूम है आप कहाँ बैठने वाले हैं. आज कितने लोग आया, 10 लोग आया, चलो इधर 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 बैठो. अरे आज 20 लोग आया, चलो तो आधा आधा शेयर करो. 30 लोग आया, चलो तो टेबल पे बैठो. तो एवरी टाइम डायनेमिकली मैं तय कर रहा हूँ ऑन दिस स्पॉट. लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है, तेरे को क्या करना है, जगह है कि नहीं कि नहीं, तेरे को आके सीधा इधर बैठना. ज्यादा स्पेस है नहीं तो आके इधर ही बैठ. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट कब तय होता है, जब मैं कंपाइल कर रहा हूं तभी मैंने तय किया, तेरे को 8000 दिया, 8000 ही दिया, अभी तेरे को इधर उधर देखना नहीं. ये मेजर डिफरेंस है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी राइट द प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर, इट ऑलवेज जनरेट्स exe फाइल्स एंड com फाइल्स, क्योंकि उसको ही मालूम नहीं वो कहाँ जाके बैठने वाला. कंप्यूटर में मेमोरी कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी जगह ही नहीं है क्योंकि पहले से काफी सारे बैठ गए मेमोरी पे, तो आज मुझे और किधर. सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली रिलोकेटेबल. हाउएवर अदर देन कंप्यूटर में एब्सोल्यूट कोई गेसिंग नहीं है, इधर पहले से तय है. इसीलिए ये जो कोडिंग है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं. व्हाई आई एम टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन टीचिंग दीज थिंग्स इज बिकॉज ये सभी आप लोग एज्यूम करते हो ना, ऐसा यही तो वो आपको वो उल्लू बना रहा है वो आर्डिनो ये लोग, कि पहले से लिख के देते हैं, डाउनलोड किया चल गया, बट ऐसा नहीं होता है. सो इफ यू डू इट एवरीथिंग ऑन योर ओन विदाउट मेकिंग एन assumption, तब जाके समझ में आता है यार मेरा मेमोरी कम होते जा रहा है, रैम कम होते जा रहे, जगह नहीं है, मैं कहाँ मैपिंग करूं. हर चीज मेटिकुलसली आपको प्लानिंग करना पड़ता है, तो खुद किया तो पता चलता है. अदरवाइज ये वो क्या कर रहा है, वो आपको सब करके दे रहा है.
बट वो डेंजरस है, वो सच में ऐसा होता नहीं. ओके, एंड दैट इज वन थिंग. सेकंड चीज व्हाट आई वाज टेलिंग इज सिमुलेशन में सब वेरीफाई नहीं होता है अनलेस यू पुट इट इन द सिस्टम. सिमुलेशन में सब कुछ नहीं होता. ठीक है. सो तो फाइनली इट इज ए चॉइस. आपको लाइक 4-5 चॉइसेस आई गिवन. आपको कौन सा सीपीयू चुनना है, इट इज चॉइस. आई थॉट स्टार्ट विथ यूजर फ्रेंडली सिंपल थिंग, देन हम कॉम्प्लिकेटेड चीज पे जाएंगे. So that's why I thought first let me give the one which is having maximum features but low cost, which supports Python as well as uh, Arduino compiler. So let's use ESP32 based our system. We'll build this system and then at least a few weeks we'll practice this. But simultaneously we also have some volunteers and they'll coordinate and will make arrangements for other sessions. So we will see about some other languages also. Means hardware is still same, but instead of writing the program in Arduino, can we write the program in Python? Right? So I don't know Python. I only know Python. I cannot teach Python. So I let me see. We have some good experts. I'll teach them. So they will teach you everything, but they cannot write programs unless I train them. Why? Because they know only Python, but then how to use this Python on this board, they don't know because this is not Arduino. Understood? If it is Arduino board, then anybody can write program because Arduino is same worldwide. However, this is our design. अभी इसमें रिले कहाँ है, एलईडी कहाँ है, मोटर्स किधर है, I only know. Nobody knows in this world because I didn't disclose. Okay, I didn't give the board details. Now you know Python, but वो अब लिखोगे कैसे जब तक मैं डिटेल्स नहीं दी. हार्डवेयर डिटेल्स तो मैं दिया नहीं. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहाँ कॉपिंग नहीं कर सकते. आपका वो इवन चैट जीपीटी भी यूज किया तो वो इसके लिए प्रोग्राम नहीं बना सकता है बिकॉज चैट जीपीटी डजंट नो वेयर आई हैव कनेक्टेड. दैट्स व्हाई naturally do it yourself. I can teach you, somebody will teach you the language, but मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना ये कहाँ connected है. So you know that. But when the Python fellow teach you, you only teach the language. But आपको फिर मैपिंग करना पड़ेगा लैंग्वेज को लेके where they are connected. So आपको करना पड़ेगा. Understood? Okay, so finally technology is a choice. हमें कौन सा टेक्नोलॉजी चुनना है. मार्केट में अवेलेबल computational devices, peripherals, sensors, compilers, everything is a choice. कंप्यूटर में कोई चॉइस नहीं है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मोनोपोली. बट हाउएवर कंप्यूटर छोड़ा तो काफी सारे चॉइसेस. बट लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग रिपीटेडली, कंप्यूटर पे कंपाइलर जो है एनीबडी कैन डू दैट. दैट्स द रीजन व्हाई कंप्यूटर मतलब आईटी इंडस्ट्री में दे आर एम्प्लॉइंग इवन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, एनी इंजीनियर कैन वर्क इन दिस डोमेन if it comes to computer, and it is happening also. But the question is, there are two things you should understand here. Why IT industry is recruiting other branches in IT industry? It's not because, right, they know language. Absolutely no. Even if they doesn't know language, for them it's okay, but they still recruit other branches of engineering. Otherwise फिर ओनली कंप्यूटर साइंस का ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, बाकी लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहा था. So people have misunderstood. People think that, oh, if I study computer science, then only I get job. That's a misconception. I'm not saying my opinion. This I am speaking with all major CEOs. You know, CEOs do come to our college. We interact with them, top CEOs, big shots. But their feedback, they are recruiting
these subject experts, not language experts. Okay, लैंग्वेज आजकल एक्चुअली लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज भी आजकल कोई लिखता नहीं है, बिकॉज नाउ यू हैव दैट स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? You don't need to start from zero, no. Already, like, no, tool boxes are available, templates are available. वो बना के देता है आपको, खाली आप उस पर फीड करना, उस टाइप का user. Like, no, in MATLAB, for example, you have a Simulink sort of a thing. You don't need to write everything. You drag it and drop it, user interface is there, it will generate the code for you. So anyhow, I'm saying those things are also there in industry. So what I'm saying is, what they are looking for is the subject experts. Subject experts means you should have the knowledge in multidisciplinary area, not only just a programming language, right? Whatever other subjects are there, like, no, you should know the components, you should know their significance, no, everything. You should know the complete details, and then on top of it, you should know the language. So undoubtedly, you should be a good programmer. There is no doubt about it. You should be a very good programmer. Everybody. But I am saying everybody, not only a computer science guy, even a mechanical, civil, electrical, everybody should be a good programmer. But doesn't mean that you should know only programming. If you know only programming, means then you don't need to study engineering, no. I can teach you only programming language. करते हैं ना डिप्लोमा 3 months का, बस वो 3 months में करके आ जाओ. अच्छा, दिन भर लैंग्वेज सिखाऊंगा बस, बाकी 40 सब्जेक्ट का जरूरत ही नहीं. So why we are wasting lakhs of rupees and 4 years of engineering? जरूरत ही नहीं. But then उसमें फर्क है, उस ऐसा भी लोग चाहिए इंडस्ट्री को, ठीक है? वो लोग को भी रिक्रूटमेंट मिलता है, हम लोग को भी मिलता है. But then what is the difference? The fellow who knows only programming language is a skilled labor. वो उतना ही कर सकता है, वो दिन भर उतना ही लिख सकता है. जैसा टाइपिस्ट है, समझो, इज अ वेरी गुड टाइपिस्ट. वो एडवोकेट क्या देगा? ये डॉक्यूमेंट देगा, वो टक 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 टाइप करेगा, वो डॉक्यूमेंट बना के देगा. सो टाइपिस्ट एडवोकेट बनता है क्या? या एडवोकेट जज बनता है क्या? नहीं. एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले. सो इंजीनियर का ठीक है, टाइपिस्ट भी थोड़ा आना चाहिए, बट आप टाइपिस्ट नहीं है. आप इंडस्ट्री में जाके वो दिन भर टाइप करते बैठो, कुछ काम दिया, डेटा एंट्री करते बैठो, डेटा टेस्टिंग करते बैठो, डेटा कन्वर्शन करते बैठो, फिर यू आर ए टाइपिस्ट? नो, यू आर नॉट ए इंजीनियर. Engineering means what? At least you know the subject, you know the significance of other areas. So then, thoda developer, creator, which some new product contributor. That's our skills. So we have that ability to do that. So we can do it anytime. या हमारा खुद का भी product हम बना सकते हैं, something like that. That's what is expectations, right? So we should be good in understanding engineering also, and also at least very good programmer in one language. That's okay. Then other languages, it won't take much time for learning. Clear? For example, being a Maharashtrian, who doesn't know Marathi? Everybody knows Marathi. Okay. Now I am saying सबको मराठी आता है. Now speak, give a talk. लैंग्वेज तो आता है ना, फिर बोलो ना. नहीं बोलो, एक्सप्रेस करो, चलो स्टेज पे आ जाओ, खड़ा हो, एक भाषण दो. नहीं सर. तो फिर लैंग्वेज आने से क्या हो गया? यू आर अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू कम्युनिकेट, अनेबल टू प्रेजेंट. फिर क्या फायदा? फिर डिड आई आस्क यू टू स्पीक इन चाइनीज? नो ना, आपको मराठी में बोला, फिर भी आप यू आर अनेबल टू स्पीक. फिर क्या फायदा आपको? यू अंडरस्टैंड? तो लैंग्वेज आने से क्या फायदा? राइट? लैंग्वेज इज ए ग्रामर ना, वो तो ठीक है, आता है, सिंटैक्स आता है, बट आप करके तो दिखाओ, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाओ. राइट? कितना मराठी आता है आपको?
Now, anybody, no? Nobody knows 100% of the language. Though everybody is a Maharashtrian, but I am saying you don't know the 100% of Marathi. ठीक है? अब कोई पंडित लोग आया वो जो बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, ठीक है? नो, कभी लोग वो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो इंटरप्रेटर चाहिए रहता है अपने को, व्हाट ही से. सो दैट मीन्स लैंग्वेज इज लाइक ए समुंदर, नो, इतना रहता है. वी नो ओनली दिस मच. सिमिलरली कंप्यूटर में भी यही होता है. Nobody knows 100% language. I am telling you, the world's best of the best coder also doesn't know the 100% language. Everybody knows only this much, but they know how to use it, how to apply it. ठीक है? So that is why आप बोलोगे मुझे लैंग्वेज सीखना है तो यार रोज मैं किताब पढ़ते रहूंगा, या मैंने 100 पेज का पढ़ा, 200 पेज का पढ़ा. अरे पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से लैंग्वेज नहीं आता. बोल के दिखाओ, करके दिखाओ, लिख के दिखाओ, इंप्लीमेंट करके दिखाओ. तो लैंग्वेज इज प्रैक्टिस. जब तक नहीं करोगे, आपको एग्जाम में 100 का 100 मार्क मिलने से कुछ फायदा नहीं है. वो ठीक है, वो चाहिए, दैट इज ओके, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर ए वेरी गुड कोडर, यू आर वेरी गुड डेवलपर. These are two different things. I hope you can understand. हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस का आंसर आता है, आपने लिखा, आपका अच्छा मार्क्स मिल गए, doesn't mean that you are a good developer. Not necessary, right? So it is like that. So that's why these are the things which is you have to do it yourself, practice it. As and when you get time, you should keep on doing the coding. Okay, so we'll take a break and we'll continue this session. 10 minutes, we'll take a break. Why not? Because finally, every compiler is generating the same language what a CPU understands. कंपाइलर अगर सेम लॉजिक है तो सेम बाइनरी कोड ही जनरेट करेगा. या ओनली थिंग इज, मैं बताया ना, एक में मसाला ज्यादा रहेगा, एक में कम रहेगा. फाइल का साइज का बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा. कोई पानी ऐसा देगा, कोई पानी ऐसा लाके देगा. जैसे आपको 5 स्टार होटल में जाके चाय पीना है, वृंदावन में चाय पीना है, इधर चाय पीना है. फाइनली चाय तो पीना है, लेकिन फर्क क्या है? इधर पिया तो वो कैसा सर्व करेगा, उधर गए तो कैसा सर्व करेगा. 5 स्टार होटल में गए तो वो पहले बाद में, पहले आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, फिर इट्स अ डिफरेंट. इधर चाय कितना? 10 रुपया, उधर 20, उधर 200 रुपया. नहीं चाहिए. Okay, so we'll take a break. Let me take some online questions if anybody. और सर जैसे आपने बोला कि एसबीसी में तो जो मेमोरी होता है हम लोग ऑलरेडी कोडेड रहता है जो हम लोग कोड लिखते हैं. तो अगर जो मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, जो नया एप्लीकेशन आएगा वो कैसे काम करेगा? नो, आई डिडंट से कि पहले से कोड रहता है. वही कोड नहीं रहता है, हम लोग जो को लिखा है वही जाएगा. बट आई एम सेइंग कंप्यूटर पे जो भी हम लिखते हैं, who is loading in the memory is operating system is loading. SBC में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम ही लिख रहे हैं जगह. तो हमें पहले से पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, 8000 9000 कहाँ लिख रहा हूँ. कंप्यूटर में कोई जरूरत नहीं है, वो OS डिसीजन लेता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट. यहाँ कोई मेमोरी मैनेजमेंट नहीं रहता है. समझो हमने कोई लोकेशन कोड किया है और हम लोग वो एसबीसी में डाल रहे हैं, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है ना, ऑक्यूपाइड नहीं, इरेज होता है वो. तो इरेज करके फिर वापस से इरेज एवरी टाइम यू हैव टू इरेज एंड देन. Okay. Any questions, anybody online? Otherwise, we'll take a break for 5 minutes. Okay, then, so take a break for 5 minutes and then we'll join.
Okay, so let's continue the session. You are there, co-host. You are. Shivani, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's continue the session. Okay, so two more slides and then we will start the lab session so that we have a rough idea that what we are doing. Okay, so we have discussed about the differences and the comparison and compilers. Okay, now finally about the minimum system. If you look at this slide, what is the criteria of selection of a CPU? There are several points are mentioned. Okay, but I keep on saying that in computer, right, you have only the 2-3 models. There is no much choice. But here, looking at the applications, hundreds and thousands of CPUs are available in the market. So that's why there is a big confusion, right? How to choose. But this will be there lifelong. Please remember, selection design is a lifelong process, which we don't do in computer. But we should understand computer. Otherwise, what's the difference between a commerce student and a engineering student? Even in computer, also the same nomenclature is there. Say, for example, tomorrow, if you are a vice president or president of a company, you are supposed to set the data center of your own company. So, of course, you, the entire nomenclature you should know, no? Whatever we are talking. Only thing is here, everything we talk about one chip, there are systems. But it's the same language is same. So we are not talking altogether a different subject. But only thing is here it is a design, there it is a choice because we don't design our own system, right, in computer, but in our case we design our system. That's the difference. Okay, so some 10-15 points are there, but say too early to understand, particularly first year and second year students. Whatever I mentioned, this slide is generally for final year students. So but still, just know, as and when we start doing the things, that time you will understand what I'm talking. So let quickly, but still, let's discuss what is these points, criteria. Architectures are two types in CPUs, in computer also, in SBCs also. One is called RISC architecture, second is called CISC architecture. These are two architectures are popularly there in the market. Computer always uses CISC architecture. कंप्यूटर छोड़ के दुनिया में सब लोग रिस्क आर्किटेक्चर यूज करते हैं. ठीक है, इंटेल छोड़ के बाकी सब लोग रिस्क यूज करते हैं. ओनली इंटेल इज सिस्क.
ये बहुत बड़ा स्टोरी है, बट इसके ऊपर एक सब्जेक्ट है, मे बी सेकेंड ईयर यू विल स्टडी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. So don't worry, there's a one full chapter is there on that. What is risk and what is CISC? So why Intel only follows CISC? However, others are not following CISC because CISC is a pretty old architecture. 30-40 years pehle computer means Intel has used CISC. So they are still continuing that. They do not want to change that architecture. It's a legacy and they have a demand also in the market. They're continuing. But then, all of a sudden, only this, right, this decade, what has happened this decade that, no, कंप्यूटर का बिजनेस जो है डिमांड कम हो गया, कंप्यूटराइजेशन का डिमांड ज्यादा हो गया. सडनली CPUs आर एवरीवेयर, सॉफ्टवेयर इंटरनेट इज एवरीवेयर. बट ये जो प्रिडिक्शन जो है वो इंटेल नहीं कर पाए, राइट, कि इतना डिमांड आने वाला है मोबाइल्स के ऊपर, इतना डिमांड्स आने वाला है जो डे टू डे लाइफ में CPUs का, दे नेवर प्रिडिक्टेड. सो दे वर नॉट मेंटली रेडी कि भाई और भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था. तो वैसा कभी कभी कोहली भी डक आउट होता है, तेंदुलकर भी डक आउट होता है कभी और कॉन्फिडेंस में गया तो होता है. ऐसा नहीं कि एवरी डे मैं सेंचुरी मारूंगा, 6 मारूंगा, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी अपोनेंट्स भी तैयारी करके आते हैं. सो ये चक्कर पे बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स ओवर कॉन्फिडेंस बाकी लोग आगे चले गए. तो इसीलिए ये जो मोबाइल्स के अंदर जो CPU है वो ERM प्रोसेसर है, ARM, एडवांस्ड रिस्क मशीन, which is not Intel, it's a different company. और इसका इतना डिमांड है मार्केट में जो इंटेल का नहीं चल रहा आर्किटेक्चर. सो इंटेल पीछे पड़. और आर्म क्या है? आर्म इज रिस्क. लाइक दैट एवरी CPU, ऑलमोस्ट एवरी CPU हम ये जो कोर्स में भी यूज करने वाले हैं, लाइक ESP32, रास्पबेरी पाई पिको, या जो भी हम यूज करने वाले हैं, दे आर ऑल रिस्क आर्किटेक्चर. CISC इज ओनली ए लेगेसी. 40 पहले हमने एक किया था, हम फॉलो कर. ओके, एनी हाउ. सो बट स्टिल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? CISC means complex instruction set, RISC means reduced instruction set. Means RISC के अंदर instructions जो है हमेशा कम रहता है, ठीक है. CISC में हमेशा instructions बहुत ही ज्यादा रहता है उसका, CPU का instructions. तो फिर आपको तो आश्चर्य हो रहा है, यार ये इसका तो कम है, कम ही instructions है RISC का. मतलब लेटेस्ट CPUs ऑल ARM वगैरह कम यूज कर रहे हैं, वो तो जो आपको बहुत ज्यादा दे रहा है, आपको भर के दे रहे. तो फिर वो आप ये क्यों ले रहे हैं, कम इंस्ट्रक्शंस वाला CPU क्यों ले रहे हैं आप? तो ये एग्जैक्टली उल्टा है. उल्टा मतलब अब जो तो सनी डीएल का डायलॉग है ना, एक हाथ क्या 2.5 किलो. तो ये ऐसा है, रिस्क का एक इंस्ट्रक्शन जो है CISC का 5 इंस्ट्रक्शंस का बराबर है, ठीक है. मीन्स रिस्क में आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखो, एक इंस्ट्रक्शन, वो जो काम कर रहा है वो काम करने के लिए CISC में 5-6 इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है. तो फिर आप इतना इंस्ट्रक्शन लेके अपने को क्या करने का, एक इंस्ट्रक्शन मुझे काफी है. As simple as that. That's why RISC is a powerful instructions, powerful. कम इंस्ट्रक्शंस है बट पावरफुल, एक वो 4 का बराबर है. Yes. So that's why these are all advanced architectures. RISC is advanced. So in our case, we never use CISC. हमारे सारे CPUs RISC है. Okay. Otherwise, it is a choice. Then about the data bus. Like I was telling, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, मिनिमम 32 बिट चाहिए डेटा, नहीं तो बहुत ही हेवी वेट हो जाए, वो बस की बात नहीं.
सो व्हाट इज अ बस? बस मीन्स ग्रुप ऑफ लाइंस जिसके ऊपर आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होता है. सो अगर आपको वो जो वो जो बस जो है, जो रोड जो है आपका, तो आपको ही मालूम है अभी अभी वो 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है. अभी एक्सप्रेस हाईवे में 6 लाइन है. तो एडवांटेज आपको मालूम है, जितना विड्थ कम होते जाएगा उतना आपको ज्यादा समय लगेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा आपको. तो ये भी ऐसा है. डेटा बस अगर 8 बिट लिया तो आपको 16 बिट डेटा भेजना है तो 2 बार भेजना पड़ेगा, 32 बिट 4 बार भेजना पड़ेगा. और वो अगर आपके पास 16 बिट है तो वन स्ट्रोक में 16 बिट भेज सकते हैं, 32 बिट तो वन स्ट्रोक, 64 बिट है तो वन स्ट्रोक. सो जितना बड़ा बस है उतना फास्ट है. सो दैट इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल एज ए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. देन दिस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेड ऑफ मीन्स व्हाट? आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर चाहिए, ज्यादा हार्डवेयर चाहिए. से दैट्स आई टोल्ड यस्टरडे आल्सो, दिस इज अ रिसर्च. आप अगर फर्स्ट ईयर में भी अगर आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए तो आप ऐसा टॉपिक्स लो जो आपको जनरल पर्पस इन नेचर, नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आप इजीली आपको समझ में आता है. तो ये चीज अभी हम जो कर रहे हैं आपको समझ में आता है इसीलिए कि एक सिंपल आपको रिसर्च प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, आप उसके ऊपर ही आप अच्छा थोड़ा काम करके पब्लिकेशंस कर सकते हो. व्हाट एवर व्हाट इज दैट कि हाउ टू पार्टीशियन, मतलब मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें सॉफ्टवेयर कितना चाहिए, हार्डवेयर कितना चाहिए, ऐसा समथिंग. वो ऑन व्हाट बेसिस कौन तय करता है, लाइक दैट. ऐसा पेपर्स आप ढूंढो, लिटरेचर देख लो. या फिर ये जो मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके लिए व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया. ठीक है. सो लाइक दैट जो आपको समझ में आता है जो डे टू डे लाइफ में, उस बेसिस में भी काफी सारे आपको स्टडी करके एक आधा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप. ओके. सो इट इज अ ट्रेड ऑफ. व्हाट इज ट्रेड ऑफ हियर मीन्स, मैंने आपको एस्टरडे कौन सा एग्जांपल बताया, आईपॉड में गाना सॉफ्टवेयर है, लेकिन वही आपका कॉलिंग बेल में गाना हार्डवेयर है. तो आपको हार्डवेयर का गाना चाहिए, सॉफ्टवेयर का गाना चाहिए. इट्स ए चॉइस. कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप बिल्ड करते वक्त आपको हार्डवेयर चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, इज ए चॉइस. ठीक है. इट्स इंटरेस्टिंग अगेन, आप इज ए चॉइस. एंड देन अबाउट दैट जे टैग, ISP वगैरह, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज ISP. पावर कंजम्पशन. पावर कंजम्पशन मीन्स, you know, most of the products are working on batteries. काफी सारे प्रोडक्ट्स आर वर्किंग ऑन बैटरीज. ठीक है. कोई भी ऐसा वेरी रेयरली होता है जो डायरेक्टली 230 वोल्ट्स का सिस्टम पे कनेक्ट है और चल रहा है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बैटरीज. तो इसीलिए हमें उसका इंपॉर्टेंस जो है समझ में आना चाहिए कि हाउ टू सेव द पावर. ओके. आप फ्यू मिली एम्पियर्स भी आपने बचाया, दैट विल लीड टू ए $1 billion इंडस्ट्री. ठीक है. सो हाउ टू सेव द पावर इज ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो कोई भी प्रोडक्ट में आप कैसा पावर सेव करोगे, इसके लिए एक आंसर नहीं है, काफी सारे आंसर्स हैं. ये भी आपके लिए एक रिसर्च टॉपिक है कि हाउ टू सेव द पावर इन ए डिवाइस. ठीक है. स्टडी करो. दीज आर ऑल बिग बिग टॉपिक्स. एंड मेमोरी का साइज. पहले आपका व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? रैम, रोम, स्क्वायर प्रॉम, फ्लैश, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, कैश. ऐसा ये सब फैंसी वर्ड्स आपको डे टू डे लाइफ में आप सुनते हो. सो स्टडी करो आप कि टाइप्स ऑफ कितने मेमोरी होते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है. कंप्यूटर में कितने टाइप्स का मेमोरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. SBC में कितना टाइप्स का मेमोरी रहते हैं, वो इंपॉर्टेंस क्या है. सो इट्स ए क्राइटेरिया कि कितना चाहिए मुझे. ठीक है. आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो, आपको लैपटॉप खरीदना है तो आपको क्वेश्चन आएगा ना, मोबाइल भी खरीदना है तो मेमोरी चॉइस है ना.
आपको फ्लैश ज्यादा चाहिए, रैम कितना चाहिए, इज आल्सो ए चॉइस। आप देखते हो ना ये ऑनलाइन, वो देता है ना आपको टेबल एक बना के, मॉडल सेम है, प्राइस डिफरेंस है, बिकॉज मेमोरी अलग है। सो थोड़ा स्टडी करो इसके ऊपर भी। देन जीपीआईओ मीन्स हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल इसी के ऊपर होने वाला है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट मीन्स व्हाट? अब कंप्यूटर पे एक सिंपल एलईडी को कनेक्ट करके देखो, इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, एक एलईडी लैपटॉप को कनेक्ट करके ऑन ऑफ करके दिखाओ, नहीं होगा आपसे, किसी से भी नहीं होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो बाकी तो दूर की बात है, लाइक आपका कंप्यूटर को एक फैन कनेक्ट करके दिखाओ, उसको ऑन ऑफ करके दिखाओ। आई एम आस्किंग, कुछ घर में, आपका घर पे कोई भी फैन है, ट्यूब है वगैरह, आपका लैपटॉप से ऑन ऑफ करके देखो, आपका पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, करके देखो। एक प्रोग्राम लिखो, चलो घर पे सब, मैं देखो मैं प्रोग्राम लिखा, सब ऑन ऑफ करके देखो, नहीं होगा। सो इट इज नॉट दैट सिंपल। सो कनेक्टिंग दीज डिवाइसेस टू कंप्यूटर इज नॉट दैट सिंपल। हाउएवर, मैं आपको अभी दिखाता हूं ऑन द टेबल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सीपीयू को कनेक्ट करके दिखाओ, ये बहुत ही सिंपल, लेकिन कंप्यूटर से नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर जीपीआईओस होते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट्स। सो प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग इज प्रेटी सिंपल। कंप्यूटर में, दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में जीपीआईओस नहीं रहते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो इजी टू इंटरफेस लाइक एलईडीज, एलसीडीज, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, स्विचेस, रिलेज, फैंस, ट्यूब। इतना आसान नहीं है कंप्यूटर को कनेक्ट करना, बट यहाँ बहुत ही सिंपल है, because GPIOs are there. So we will see about that, what is GPIOs. And then baki peripherals, like, no, you will slowly understand that what is other peripherals like timers, interrupts, ADC, DAC, ये सारे various peripherals है. Like morning also I was telling कि CPU alone cannot do all these things. CPU only a computational unit. बाकी सारे, आपको माउस कनेक्ट करना है समझो, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट कम्युनिकेशन। ओके, आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, इट्स डिफरेंट, आपको सेंसर्स कनेक्ट करना है, इट्स डिफरेंट। तो ये इसके लिए ये सारे पेरिफेरल्स चाहिए जो मैंने यहाँ दी। सो इट इज टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड दैट मुझे एक सीपीयू सेलेक्ट करना है। तो देन फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से एलईडीज कनेक्ट करना है, तो आपके कितने एलईडीज कनेक्ट करना है, चलो आप बताओ कितना चाहिए, हाउ मेनी एलईडीज यू वांट टू कनेक्ट? 5। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपने रेलवे स्टेशन गया होगा, बड़ा बड़ा एलईडीज का देखा, डिस्प्ले बोर्ड्स, कितने एलईडीज होते हैं उसमें? हजारों में होते हैं। नाउ आई एम आस्किंग हाउ इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट 1000 एलईडीज टू वन सीपीयू? उसके ऊपर इतना पिंस भी नहीं है, तो हाउ विल यू कनेक्ट इट? अंडरस्टैंड? So that's the challenge, right? When you are choosing these CPUs, when your demand is hundreds and thousands of input-output devices like LEDs, sensors, switches, buzzers, LCD, so how to connect them? Understand? तो उतना pins तो चाहिए ना connect करने के लिए CPU से. So that's why this is a design or selection criteria, how to make them. That's what is the design, no? एंड देन आजकल ये चालू हो गया कि वायरलेस कम्युनिकेशन, हमें आजकल वो भी चाहिए कि मुझे वाइड कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, मुझे वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए, सो दैट आई वांट टू कनेक्ट इट टू ब्लूटूथ और वाईफाई, लाइक दैट वायरलेसली आई वांट टू कंट्रोल कम्युनिकेट द थिंग्स। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट हो गया, सीपीयू के अंदर ही चाहिए। एंड देन अबाउट द डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स मीन्स लेट्स से कंपाइलर चाहिए, प्रोग्राम लिखना है तो कंपाइलर चाहिए, और प्रोग्राम को लोड करना है, ट्रांसफर करना है, इस चिप के अंदर बर्न करना है, तो प्रोग्रामर चाहिए। तो ये टूल्स कौन कहाँ मिलेगा? ये सब कंपाइलर्स अभी माइक्रोसॉफ्ट तो बेचता है, फ्री में नहीं देता है, इट्स लाइक दैट। बट लेकिन हम ये माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोलर नहीं है ना, ये तो और किसी का है। तो ये कंपाइलर को खरीदना है, मुझे फ्रीली मिलेगा, सो दैट इज ए चॉइस। कुछ लोग बेचते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मैटलैब इज ए
commercial product. Each license will cost you lakhs of rupees. मतलब एक छोटा सा अगर मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए मैं मैटलैब खरीदूं, इट्स लाइक 10 लाख मैटलैब पे स्पेंड कर 10-20 लाख रुपए, like that. So that's why when you develop anything, make sure all the compilers, tools and technologies, what is their cost, are they available freely or not? If it is a commercial, what is their cost? वो कमर्शियल है तो भी उनमें भी टाइप्स रहते हैं, ईयरली लाइसेंस अलग रहता है, लाइफ लॉन्ग लाइसेंस अलग रहता है, अपग्रेड्स को अलग से चार्ज करते हैं, कुछ लोग कैसे चार्ज करते हैं, पर बोर्ड चार्ज करते हैं. पर बोर्ड मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप किसी का सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बना रहे हैं, वो मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर लोड कर रहे हैं, समझे, वो कैसा चार्ज करते हैं मालूम है, पर मोबाइल चार्ज करते हैं. मतलब आपने 1000 मोबाइल बेचा तो उसको 1000 मल्टीप्लाइड बाय उतना डॉलर्स उसको देना पड़ेगा. ऐसा भी इट्स कॉल्ड रॉयलिटी, इस टाइप का भी बिजनेस होता है. So you have to keep it all these things in your mind, क्योंकि finally what we are presenting is a product development. So एक product मैं develop कर रहा हूँ, आपको business proposal देना है तो आपको सोचना पड़ेगा मेरा overall selection design criteria क्या है, finally मुझे cost कितने में पड़ने वाला, that is very important. Otherwise क्या होता है कि आपको शुरू में थोड़ा नो, फॉर एग्जाम्पल ये CPU 50 रुपये का, चलो ये CPU 200 रुपये का, तो आपको यार ये तो 50 रुपये का, चलो मैं डिजाइन कर देता हूँ. फिर बाद में जब पता चला कि यार वो कंपाइलर नो आपको खरीदना पड़ेगा, इसका कंपाइलर फ्री है, फिर गया ना, फिर आपका एनर्जी वेस्ट टाइम. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ये सभी देखना पड़ेगा. और वन मोर थिंग इज योर सपोर्ट. सपोर्ट मीन्स आज फॉर एग्जाम्पल आपको ये CPU के अंदर जो भी डिटेल्स है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ कोड लिख रहे हैं, बग्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, फिर आपको मदद कौन करेगा? कंपनी का सपोर्ट चाहिए ना, जिसने ये डिजाइन किया. सो आर दे सपोर्टिंग यू आर नॉट? सो दैट्स व्हाई बेटर यू शुड सी कि प्रोडक्ट बना रहा है, मैं कुछ कहीं अटक गया तो सपोर्ट है या नहीं, नहीं तो फिर वापस आपका प्रॉब्लम हो जाए. बिकॉज यू आर इन इंडस्ट्री नो, एज अ बीइंग ए इंडस्ट्री, इतना लोगों का एम्प्लॉय किया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लोग रिसर्च कर रहे हैं, बाद में पता चला कि यार ये लोग अटक गए, अभी वापस जीरो से शुरू कर, वापस जीपीएस चेंज कर, मतलब आपको जो 6 महीना पगार दिया सब गए, वापस चालू कर. ये सब टेंशन की बात है. सो यू हैव टू सी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ सपोर्ट. व्हाट इज द अदर सपोर्ट? So other support means like your supply chain. ठीक है, आज फॉर एग्जांपल वॉर चल रहा है, ठीक है, अभी वॉर चल रहा है तो वो जो डिफेंस सेक्टर पे जो मिसाइल्स में वगैरह जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, वो अभी ये लोग ने बंद किया सप्लाई कर के, हम नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज आवर टर्म्स आर नॉट गुड, आई डोंट गिव द कंपोनेंट्स. फिर आपका प्रोडक्शन बंद हो. अब ये कोविड पीरियड पे चाइना दे आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, ये माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह उनसे बनता था. तो अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो लोगों CPUs देना बंद किया, लेकिन फिर एंटायर ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा कार रेडी है, खाली वो CPU नहीं है. फिर भाई कार कैसा बेचूं, वो तो पूरा ब्लॉक हो गई. सो एक कंपोनेंट भी अगर वो लोगों ने ब्लॉक किया, आपका पूरा प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगा. सो ये सब थोड़ा यू हैव टू केयरफुली थिंक कि किसी का हाथ में आप पूरा हैंडीकैप्ड हो जाओगे उसका. इसलिए आपको अल्टरनेट ऑप्शंस भी रखना पड़ेगा. एटलीस्ट मेरा कंपनी डूबना नहीं चाहिए अगर कुछ हो गया तो. So this is the strategy, you should keep it in mind. Like programming languages, I was telling that हम लोग पहले for years 30 years we have written in assembly language. आज भी हम चाहिए तो लिख सकते हैं, बट कोई encouragement नहीं है मार्केट में असेंबली में लिखा. तो advantage of writing programs in assembly languages, you can write a optimized code. The best of the best optimized code is possible only if you write in assembly language. लेकिन आजकल पिछले 10 साल से more than 10 years, almost 20 years हो गए, कोई असेंबली पे नहीं लिखता है, क्योंकि असेंबली is not so easy to understand because that's a machine language, right?
That is one thing. Second thing is no, आजकल expectation ज़्यादा हो गया industry से. So the kind of coding they are expecting, lot of like AI, ML वगैरह वो सब devices में चाहिए. तो वो तो impossible है to code it in assembly language. That's the reason assembly is no more. Second reason. Third reason why assembly is no more, because आजकल the amount of integration available in the CPU much higher than what it used to be. हम लोग 1990s में when we were developing the products, do you know कितना memory मिलता था हम लोग को CPU के अंदर? 256 bytes. मतलब हमको प्रोग्राम लिखना है, हम लोग को गिनते थे, 1 बाइट ज्यादा हो गया, टेंशन आना शुरू हो जाता था, यार नहीं बैठेगा 256 बाइट, या चलो बाद में 512 किलोबाइट्स, मैक्सिमम हमको 1 किलोबाइट मिलता था बस एट द मोस्ट. मतलब वर्जन्स 2 साल के बाद चलो 1 KB आया. हम लोग जिंदगी, इसलिए आधा जिंदगी जो है हम लोग उसमें ही चला गया, बाइट्स को गिनते गिनते. ठीक है, बट आई एम सेइंग 2000 के बाद व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग सीमेंस एलएनटी वगैरह, कोई असेंबली पूछता नहीं, वो लोग ही पहले सिलेबस देते, सी में पढ़ाओ, एम्बेडेड सी में. यार मैंने तो पूरा जिंदगी असेंबली में बताई, ये लोग सी में पढ़ाने के लिए बोल, हम लोग बाइट्स गिनते थे, इनको तो जरूरत ही नहीं. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि फर्स्ट कंपनी ये जो टेक्नोलॉजी लाया था वो एटमेल कंपनी था, अमेरिकन कंपनी एटमेल. एटमेल में क्या लेके आया था कि फ्लैश मेमोरी लेके आया. फर्स्ट दे आर द फर्स्ट कंपनी हु इंट्रोड्यूस्ड फ्लैश मेमोरी. तो जैसे ही फ्लैश मेमोरी आ गया सीपीयू के अंदर, इंटीग्रेटिंग मेगा एमबी में मिलना शुरू हो गया. केबी तो चला गया, एमबी में चालू हो गया. तो एमबी में अगर मैं राइट, इफ आई कैन राइट अ प्रोग्राम इन एमबी, तो नोबडी इज बॉदर्ड टू 2 बाइट बचा है कि 10 बाइट बचा है, जल्दी लिख, मुझे अभी का चाहिए कोड, कल तक. इंडस्ट्री में ऐसे पूछ सकता सर कब, आज चाहिए बोलते हो, यार अभी तो ऑर्डर दिया, नहीं चाहिए मुझे. इंडस्ट्री इज ऑलवेज लाइक दैट. तो फिर वो असेंबली पे नहीं हो सकता. तो देन यू नो पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है क्योंकि आपका सीपीयू के अंदर एमबी में, जीबी में, आजकल टीबी में भी मिलने लगा मेमोरीज. तो देन हु केयर्स इन असेंबली लैंग्वेज? आपने बचाया, अबे किसको चाहिए, जल्दी लिखो, अच्छा लिखो, स्मार्ट बनाओ, हाई फाई एल्गोरिथम्स लिखो, डेटाबेस बनाओ, ऑल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, आईओटी, ये सब इसमें डाल के दिखो. मतलब सीपीयू के अंदर डेटाबेस बना के दिखो, लाइक दैट. सीपीयू में एआई इंप्लीमेंट करके दिखो. जो हम जनरली वो एआई कब होता था, हम लोग एक सुपर कंप्यूटर हुआ करता था थोड़ा ना वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ऐसा ना, दैट यूज्ड टू बी इन समवेयर इन पुणे वगैरह, सीडैक में वगैरह, ऐसा एक सेंटर हुआ करता था जो डेटाबेस वगैरह. अभी बोलते कि डिवाइस में करके दिखो. दैट्स द एक्सपेक्टेशन टुडे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. ये जो मिसाइल्स वगैरह वो सब डिवाइसेस के अंदर ही है, वो सब सिस्टम के अंदर ही है. सो दैट्स व्हाई टुडे व्हाट इज मिनिमम इज एम्बेडेड सी. इसलिए इसका डिमांड है 80%. अभी का डिमांड है एम्बेडेड सी का 80%. असेंबली अभी भी लिख सकते हो, जहां आपको परफॉर्मेंस चाहिए वहां अभी भी लिख सकते हो. सो देयर इज ए वन एडवांटेज इज देयर, एम्बेडेड सी के अंदर असेंबली मिक्स कर सकते हो. देयर इज ए प्रोविजन समवेयर, एक सेक्शन आपको मिक्स करना है, आप कर सकते हो. दैट्स कॉल्ड यू कैन कंबाइन एम्बेडेड सी विद सी असेंबली, इट्स पॉसिबल. ठीक है, एनीहाउ, बट फिर भी C++, जावा, पाइथन अभी वो भी आ रहा है. Only why Python and all is picking up is because you are already doing this AI ML sort of a algorithm in computers. You are already comfortable in doing things क्योंकि वहाँ resources का तो कोई कमी नहीं है. And in fact you are doing these things on cloud platforms. तो वो you are already familiar with that. इसलिए लोग भी सोच रहे हैं कि भाई वही लैंग्वेज इधर भी यूज करो. ठीक है, यहाँ क्यों हम अफोर्ड कर पा रहे यूज करने के लिए, बिकॉज यहाँ भी मैं आपको इंटरनेट दे रहा हूँ, यहाँ भी आपका क्लाउड का मैं प्रोविजन दे रहा हूँ. तो व्हाई डोंट यू यूज द डेटाबेस ऑफ द क्लाउड एंड डू दैट. तो दैट्स व्हाई यहाँ दे आर प्रोवाइडिंग 3 ऑप्शंस, राइट? एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग. ठीक है, दिस आर बिग टर्म्स, आई एम जस्ट टेलिंग. मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा कंप्यूटेशन इस डिवाइस पे ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी. इफ यू आर ऑन द इंटरनेट,
then the same device can do it on cloud computing also. मतलब इस डिवाइस को आज मेरा टेबल पे जो पड़ा है, इसको मुझे सुपर कंप्यूटर बनाना है, मैं बना सकता हूँ। आपका मोबाइल को सुपर कंप्यूटर बनाना है, मैं बना सकता हूँ। क्यों? भले ही इसमें उतना डेटाबेस नहीं है, भले इसमें इतना कंप्यूटेशन पावर नहीं है, but this is connected to the data center. So I can plug it. I can put my problem statement there, get the results back, and fire a missile. कर सकता हूँ. So this is a supercomputer. It's possible. So that's why I am saying. So people are saying that why only C, Go for C++, Java, Python. We are okay because that is possible to make use of the resources. जैसा for example driverless car. Can you imagine कि एक vehicle while driving itself, it has to, how much amount of data it has to gather, जो एक human से नहीं हो पा रहा है वो ड्राइविंग वगैरह. You expect machine to do that. मतलब you are making a, can you imagine कि how much amount of data it has to gather while that vehicle is moving 100 and 150 kilometers speed से जब जा रहा है, then it has to control the entire thing. Itna image processing is involved. One image means how many pixels are there, and so on. So वो सब assembly में नहीं होगा. Thousands, millions of codes you have to write, तब जाके कुछ अच्छा smart expert system बन सकता है. Okay. आजकल humanoids, robots, ठीक है? It's not a, right? It's not connected to 230 volts, right? It's a battery operated system. It is moving. It's a portable. But however, it's a human. Humanoid means what? Is equivalent to human. Natural language पे it is speaking. उतना AI उसमें inbuilt कहाँ से आ रहा है? Is it possible? You require a lot of millions of lines of code, no, to make an expert system. तो उतना इंटीग्रेट करना है, उतना वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स अगर आपको लिखना है, सो आई डोंट थिंक ये जो जमाने का कोडिंग नहीं कर सकते, आपको एडवांस्ड करना पड़ेगा. सो दैट्स द रीजन व्हाई नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग हाई एंड लैंग्वेजेस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर मच हाई. सो बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन दैट सब जगह पाइथन जावा ही चाहिए. ये ऐसा प्रोडक्ट्स में वो सब नहीं चाहिए. एम्बेडेड सी इज मोर देन एनफ. दैट्स व्हाई 80% ऑफ द कस्टमर्स आर ओके विथ एम्बेडेड सी. बट स्टिल एज आई सेड देयर आर एक्सपर्ट सिस्टम्स, ड्राइवरलेस कार्स, ह्यूमनॉइड्स या गाइडेड सिस्टम्स वगैरह, उस पे यू रिक्वायर एक्सपर्ट. Okay, so this is the last slide for the day. What we are doing is minimum system today. So I will all give you, I've shared that Google Doc. So those who wants to have this setup, you can fill the details. So I will issue the board where what today we will be doing is, I will demonstrate one, but you will be doing yourself. Minimum system. What we are supposed to begin with this course is minimum system, and then making it maximum system. Maximum system means, like yesterday I said, so many things are there. Pura motors, sensors, वो सभी LCD, वो last तक वो सभी populate करना है, will make a complicated thing. Minimum means अभी मिनिमम में क्या है स्लाइड पे? मिनिमम मीन्स व्हाट? इतना ही करना है आज. इतना करके आपको टेस्ट करना है कि मेरा सिस्टम चल रहा है कि. ओके, सो व्हेन ए सिस्टम इज मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम? बेयर मिनिमम क्या है? आपको एक सिस्टम बनाना है. व्हाट इज मिनिमम? सीपीयू चाहिए फर्स्ट, पावर सप्लाई चाहिए. वेरी गुड. सो one is CPU. Somebody said memory चाहिए. Otherwise program कहाँ जाएगा? So memory चाहिए. memory है, चलो memory दिया, CPU दिया, power supply चाहिए. तीन तो आपको
the moment if I give the board, what you will be requiring is इस पे CPU चाहिए, and memory, our understanding is part of the CPU. I'm externally, because ours is a SBC, not computer. So assuming that memory is there inside the CPU. चलो, 2-in-1. But power तो CPU में नहीं, power तो देना पड़ेगा आपको. So you have to give the power. So 2 things. What else? अभी इतना जल्दी नहीं है. मिनिमम क्या है? मिनिमम मीन्स पावर दे दिया आपने, ठीक है, सीपीयू कनेक्ट किया. व्हाट इज द थर्ड? नेक्स्ट इज दैट्स द सीपीयू विद मेमोरी मीन्स प्रोग्राम. मिनिमम मीन्स एक प्रोग्राम तो चाहिए ना. सो एनी सीपीयू विदाउट प्रोग्राम इज ए डेड सिस्टम. Undoubtedly, a CPU without program is a dead system. Dead system means you don't know how it behaves. अगर वो CPU में अगर प्रोग्राम आप नहीं डाला तो आपको मालूम नहीं वो कर क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा. सेम थिंग लाइक ह्यूमन पे लाइफ नहीं है, इज ए डेड. जब तक लाइफ है तब तक ह्यूमन है बस. अदरवाइज इट्स ए व्हाट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट. वो मुन्ना बॉय में बोलते हैं सब्जेक्ट. लाइफ है तो है. ओके. सो सीपीयू विदाउट प्रोग्राम इज डेड. मीन्स आपको मालूम नहीं पड़ेगा भी वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, क्या है. आपको मैं एक मदरबोर्ड आप मार्केट से खरीदा है, ठीक है, इज इट वर्किंग, नॉन वर्किंग, आपको कब पता चलेगा? प्रोग्राम लोड करने के बाद ही पता चलेगा ना, नहीं तो you don't know. So unless we load the program, we don't know. So our next requirement is you mount the CPU, right? You give the power supply. Third is कुछ भी करके उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम तो डालना पड़ेगा, तब जाके आपको कंफर्म हो जाएगा मैंने बोर्ड जो बनाया, सोल्डर किया, जो भी किया, इसे वर्किंग और नॉट. आज आपको इतना ही करना है. That is called minimum system. Okay, but carefully look at the slide. How to write a program. अब चलो अभी प्रोग्राम कैसे लिखोगे? सीपीयू तो इधर है, आपके हाथ में है. प्रोग्राम तो कंप्यूटर पे लिखोगे, तो वहां से इस पे कैसा आएगा प्रोग्राम? इसके अंदर अरे वो somebody said ISP. Very good. Who said ISP? You are Ruchi here. फर्स्ट ईयर में एसपी मालूम. ओके ओके ओके. सो इट्स ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. सीपीयू तो मेरे हाथ में है, प्रोग्राम कंप्यूटर पे है, वहां से इस पे लोड करना है. तो हाउ विल आई कनेक्ट इट, हाउ विल आई प्रोग्राम? इट्स रियली इंटरेस्टिंग इफ यू केयरफुली थिंक ऑफ इट. अब इसमें प्रोग्राम नहीं है, ए डेड सिस्टम है. ए डेड सिस्टम काम कब करता है? प्रोग्राम लोड करने के बाद. ओके. अभी मुझे प्रोग्राम लोड करना है, लेकिन ये पहले से डेड है, तो प्रोग्राम कैसा लोड करूं? प्रोग्राम लोड करने के लिए प्रोग्राम चाहिए, ठीक है. आई विल पुट द क्वेश्चन अदर वे अराउंड. अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? You understood my question, right? सीड पहले है, प्लांट पहले है? बिना सीड प्लांट कहां से है? बिना कौन सा? तो पहला कौन सा है? इसमें प्रोग्राम लोड करने के लिए प्रोग्राम पहले चाहिए इसके अंदर. अदरवाइज सीपीयू कैसा प्रोग्राम एक्सेप्ट कैसा करेगा ना? आप दे रहे हो, कंप्यूटर इज गिविंग, इसमें लोड करना है, लेकिन इसमें पहले प्रोग्राम तो चाहिए ना टू एक्सेप्ट इट. ये पहले से डेड है ना. To accept a program, you require a program. Understood? That's the challenge. So that is why it is called ISP, in system programming. ISP means ये सभी CPUs में नहीं होते, सभी में नहीं होते. कुछ लोग क्या करते हैं, while manufacturing the CPU itself, they put a code that is called ISP.
ठीक है, मतलब अभी ये ब्लैंक नहीं है, दैट इट हैज ए समथिंग कॉल्ड फर्मवेयर। पहले से ही है, आप जब खरीदोगे वो सीपीयू के अंदर डाल के दिया आपको। ठीक है, जैसा पेन ड्राइव आप खरीदते हो वो ब्लैंक नहीं है, उसमें कुछ तो है जो आप कनेक्ट करते हैं वो डिटेक्ट कर रहा है, मतलब पहले से कुछ तो प्रोग्राम है उसमें, इसलिए इट इज कम्युनिकेटिंग, ब्लैंक नहीं है वो। तो ये भी भले ही ब्लैंक है बट ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ कोड है, इफ यू प्लग इट वो डिटेक्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स, दैट इज कॉल्ड आईएसपी, बट ये सभी में नहीं होता। सो नाउ इट इज योर चॉइस, ये सीपीयू खरीदते वक्त बनाते वक्त आपको केयरफुली ऐसा सीपीयू लेना पड़ेगा जिसमें आईएसपी इनबिल्ट है। ठीक है, तो फिर द अदर क्वेश्चन इज दैट ऐसा कौन से लोग हैं जो नॉन आईएसपी खरीदते हैं, और क्या करेगा उसको लेके, फिर उसको कैसा प्रोग्राम होगा। अंडरस्टूड, नॉन आईएसपी कौन लेता है, इंडस्ट्री वाला लेता है, नॉट डेवलपर। सो टू टाइप ऑफ पीपल, वन इज ए डेवलपर, सेकंड इज ए प्रोडक्शन। जब हम लोग डिजाइन करते हैं वी प्रेफर आईएसपी, क्योंकि मुझे फिर नो मैं हर रोज मॉडिफाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मुझे आईएसपी चाहिए। लेकिन मेरे पास एक बार डन है, अभी मेरा वॉशिंग मशीन बनाना शुरू करना है, लाइन पे प्रोडक्शन करना है, उसके अंदर मुझे आईएसपी नहीं देना है, उस पर आईएसपी दिया फिर मेरा कोई ना कोई कॉपी मारेगा या उसको मॉडिफाई करेगा प्रोग्राम, मैंने आईएसपी कनेक्शन दिया उस पर, तो मुझे उसमें मैं आईएसपी नहीं दूंगा। So when my product is in production, that time I don't use any ISP products in the system. कोई उस प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो जिंदगी भर यूज करो और फेंक दो। So such kind of CPUs where वो उसको प्रोग्राम करने के लिए अदर अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट रहते हैं which are very expensive to program those chips. They are very expensive, 40-50 हजार का नीचे नहीं रहता खाली प्रोग्राम लिखने के लिए, वो हम लोग को नहीं चाहिए उस टाइप का चिप्स। हमको कौन सा चाहिए, प्लग इन किया, डाउनलोड किया, प्रोग्राम इस पे लोड हो गया, दैट इज कॉल्ड आईएसपी। सो वी प्रिफर एनी सीपीयू एज ऑन अभी अपना कोर्स में, एनी सीपीयू व्हिच हैज ए इनबिल्ट आईएसपी, सो दैट वो आईएसपी हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, वी विल कनेक्ट इट टू यूएसबी ऑफ द कंप्यूटर एंड देन वी राइट द कोड एंड वी डाउनलोड इट फ्रॉम द यूएसबी टू द चिप। नॉन आईएसपी, तो फिर हम उसको कैसे कोड करेंगे, वो उसके इक्विपमेंट आता है, एक कॉल्ड प्रोग्रामर, ऐसा नो देयर इज इक्विपमेंट प्रोग्रामिंग द मेमोरी, वो फिर वो आईएसपी के थ्रू नहीं होता है, सम स्पेशल पिन्स रहते हैं उसके उसके थ्रू आईएसपी। अच्छा, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ आईएसपी, एडवांटेज मैं पता है, व्हाट इज द ड्रॉबैक, इंडस्ट्री क्यों नहीं प्रेफर करता है आईएसपी। वेरी गुड, आईएसपी मीन्स पहले से प्रोग्राम है, मतलब आपका थोड़ा जगह चला गया, आपका लाइफ लॉन्ग के लिए जगह चला गया आपका, वो आप इरेज नहीं कर सकते, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर स्पेस। जब आपको प्रोडक्शन में बेचना है तो नहीं चाहिए आईएसपी, इसीलिए हमें नहीं चाहिए। सम वेस्टेड गया उसमें, बट हमें चाहिए वो, क्योंकि मुझे हर रोज लिखना है, तो मुझे 40,000 का इक्विपमेंट नहीं चाहिए मुझे। डेस्कटॉप में आपका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर में आईएसपी नहीं है, पहले सीपीयू के अंदर मेमोरी नहीं है, आपका प्रोग्राम इज एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ प्रोग्राम इज इंटरनल, मेमोरी इंटरनल, वहां मेमोरी एक्सटर्नल है ना, आपका प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी में भी नहीं है, हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क से मेमोरी पे आता है, मेमोरी से सीपीयू में जाता है, बहुत बड़ा हायरार्की है आपका कंप्यूटर में, वो भी कौन कर रहे हैं, सब ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं, इसलिए आपका जिंदगी जो है कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का है ही नहीं, यू आर हेल्पलेस कंप्यूटर में बिना ऑपरेट, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इज द रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आपका हैंडीकैप्ड बना दिया उसने, मजबूरी कर दिया, तो आपका कंप्यूटर बिना ओएस का नहीं चले, ऐसा बना दिया। लेकिन मेरा अभी वो कंप्यूटर छोड़ दो,
यू टेल मी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट का मदद ले रहा है, कुछ जरूरत नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, अभी 1 साल हम जो करने वाले हैं, ठीक है, ये एंटायर कोर्स में ना आप आईबीएम को रेफर करोगे, ना माइक्रोसॉफ्ट को रेफर करोगे, ना इंटेल को रेफर करोगे, ठीक है। हाउएवर कंप्यूटर में जिंदगी भर पिछले एटलीस्ट माय एज इज 55, ठीक है, एटलीस्ट लास्ट 35 ईयर्स आई एम कंप्यूटर मींस आई नो माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, आईबीएम। At the same time, इतना ही 35 years I am also working here, where I don't use Microsoft, Intel and IBM. दोनों दुनिया में देखा इक्वली, इतना 30+ years पॉसिबल है। लेकिन क्या हो गया, वो बोलता है ना, वो चेंज हो गया। एक जमाने में ये 3 ही कंपनीज थे, अब ये जहां का वहां का ही रह गया, ये सब आगे निकल गया। बिजनेस अभी यहां नहीं है, ये रियलिटी है। जितना सीपीयूस बन रहा है, जितना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बन रहा है, जितना एएमएल एप्लीकेशन वगैरह बन रहा है, नॉट फॉर कंप्यूटर्स, इट इज अदर देन कंप्यूटर्स, दे आर एवरीवेयर। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कितना सीपीयूस है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कितना सीपीयूस है, मोबाइल में कितना डिवाइसेस। आपका वो जो डोर लॉकिंग इज आल्सो ए सीपीयू, आपका घर पे फैन ट्यूब एवरी सब सीपीयू। फिर ये इसका सब सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? आप ही को बनाना है। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है, आप आर्ट साइंस जैसे ही लिखोगे प्रोग्राम, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली कंप्यूटर। फिर आप में और उसमें फर्क क्या? आई एम नॉट सेइंग कि डिमांड नहीं, उधर भी डिमांड है, उधर भी एएमएल का डिमांड है कि मतलब फॉर एग्जांपल चलो ये लोन कौन लेने वाला है, वो उसका एआई यूज करते हैं, कस्टमर्स का वो इमोशंस के साथ देखते हैं कौन कौन नो, अरे इज लुकिंग फॉर, अच्छा ये जूता खरीदने वाला है, कैसा उसको पता चला, एआई का सॉफ्टवेयर वो देखते हैं। सो उधर भी चल रहा है, बट आई एम सेइंग उस टाइप का एआई लिखने के लिए रियली इंजीनियरिंग नॉलेज का जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं ना। डेटा इज गिवन and you only doing the analysis, writing a set of equations. Anybody can do that. Commerce student, MCA be also employed there, BSc computer is also employed there, okay, civil mechanical is also employed there, anybody is employed to for the same kind of application. But however, बस उतना छोड़ के you tell me any other application, do they understand this thing? आज तक हमें ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बार बार कितना न्यू डिवाइसेस आ रहा है, इसको पढ़ते चेंज हो रहा है ना, इतना फास्ट, तो हम लोग को भी भागना पड़ रहा है इसमें भी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया। इसलिए आई मीन व्हाई वी आर एनर्जेटिक, क्योंकि हर टाइम समथिंग न्यू फॉर लर्निंग नो, इसलिए हमें मजा आता है। इसलिए आई एम सेइंग कि आई नो ओनली दिस मच। अब ये जनरेशन है, आप न्यू बैच है, आई एम श्योर आप में से मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, आई एम श्योर। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट्स करने के लिए जाओगे, कुछ ना कुछ नया डिवाइस लेके आने वाला है, कुछ ना कुछ कंपाइलर्स लेके आने वाला है। आई विल लर्न सम, और ऐसा भी आ गया क्या मार्केट में, लाइक दैट इज एक्साइटिंग इन दिस डोमेन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड आवरसेल्फ। व्हाट आर द न्यू, आई मीन computational devices, sensors are coming, like, but only difference, like yesterday I was telling, disruptive technologies, industry 4.0, इसमें कैसा है, इसमें थोड़ा मेजर डिफरेंस है, मेनली आपका जनरेशन के लिए। हम लोग को काफी टाइम लगता था चेंज आने के लिए, आपका टाइम पे बहुत ही फास्ट है, इतना रैपिड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट जो है पहले इतना नहीं हुआ। लेकिन आपका ये जो 10 इयर्स में जितना हुआ ना, उतना कभी नहीं हुआ। द वे नो थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड वगैरह, लाइक यू हैव सीन ना, 10 इयर्स में करेंसी वैनिश हो गया, 10 इयर्स में लैंडलाइंस वैनिश हो गए, 10 इयर्स में टेलीविजन्स, वो जो पिक्चर ट्यूब, पहले पिक्चर ट्यूब्स था, वो वैनिश हो गए। 10 इयर्स में ऑलमोस्ट डेस्कटॉप्स आर गेटिंग वैनिश्ड, मोबाइल्स आ गए, मोबाइल इज ए कंप्यूटर नो ऑलमोस्ट, एंड लाइक दैट क्या लाइक so many things are like petrol vehicles, diesel vehicles जा रहा है ना अभी। I never expected India will adopt that fast. हम लोग को लगता है कि हम
अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टेस्ला तो 2-3 करोड़ का नीचे बेचता ही नहीं है। तो मुझे लगा यार इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, कैसा होगा। लेकिन सी लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ टाटा, टाटा एंड महिंद्रा। पहले महिंद्रा शुरू किया, बट टाटा ने, यू नो द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ टाटा, व्हेन ही हैज मैन्युफैक्चर्ड द नैनो, उसको लगा यार इंडिया में सबको 4 व्हीलर मिलना चाहिए ना, सबको अफोर्ड होना चाहिए। दैट वाज हिज आइडिया। देन उसने एक अच्छा डिजाइन किया था, लो कॉस्ट, जो हिज आइडिया वाज अराउंड 1 लाख समथिंग, 1 लाख उस पे बेचना। एंड फर्स्ट ही दैट ऑफर ही हैज गिवन टू बंगाल, वहाँ ये प्लांट रखा था उधर। बट बिकॉज ऑफ दैट बंगाल गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, चेंज इन गवर्नमेंट, पहले कम्युनिस्ट थे, फिर बाद में ममता आ गया, फिर देयर वाज अ रिफ्ट, फिर इसका बीच में टाटा को सफर करना पड़ा कि भाई नो 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 नो, वी डोंट एग्री, व्हाट लिटरली हैज टू विकेट। मतलब जो प्लांट खड़ा किया था 4 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग नैनो कंपनी, हैज टू शिफ्ट दैट एंटायर कंपनी टू गुजरात। बहुत बड़ा लॉस हो गया, पूरा प्लांट शिफ्ट करना पड़ा, फर्स्ट नंबर 1। नंबर 2, और एक बड़ा मिस्टेक हो गया था कि व्हेन ही एक्चुअली लॉन्च द व्हीकल, एडवर्टाइजमेंट में उसने बहुत बड़ा गलती की। उसने ऑफर किया था कि भाई दिस कार इज ए मिडिल मेंस कार, मतलब लो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमने बनाया। ऐसा जब उसने एडवर्टाइज किया तो लोगों को क्या लगने लगा, अगर मैं ये कार खरीदूंगा तो मैं मिडिल क्लास हूँ। आजकल यही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब तेरे पास पैसा नहीं है तो भी वो हम लोग वो एप्पल का स्टिकर डाल के घूमते मेरे पास ये स्टेटस एक बड़ा हर कंट्री में है, बट इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही। तो ये एक फैशन ज्यादा हो गया ना, तो मतलब लोगों को लगा अरे यार मिडिल मैन जा रहे हैं कार में, नोबडी वांट्स। तो वो ऐसा एडवर्टाइज करना नहीं चाहिए था, वो ऐसा बोलना चाहिए था कि भाई इकोनॉमिकल कार, ऐसा कुछ डिफरेंटली बोलना चाहिए था। ही एग्रीड आल्सो इन सम कि हमने दैट में, सो वहां वो फेल हो गया। तो व्हाट एवर, सो ही हैज मिजरेबली फेल्ड। बहुत ही लास्ट में था कंपनी, एक तो शिफ्ट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बाद में चला नहीं, अनदर इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोमोबाइल में टाटा हैज लिटरली फेल्ड। देन देयर वाज अनदर स्टोरी कि यूके का कंपनी है जागुआर। जागुआर एक टाइम ऐसा था कि इतने प्रॉफिट में थे कि एक्चुअली टाटा वाज इन ट्रेमेंडस लॉस, कि देन दे ऑफर टाटा कि आपको बेचना है तो बोलो हम खरीदेंगे, इस टाइप का टर्म्स एंड कंडीशंस था एक जमाने में। अब टाटा ने जागुआर को खरीदा, ठीक है। बट यू नो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ जागुआर का लेने का? जागुआर इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, यूके का द बेस्ट मॉडल। वहां चला नहीं चला दैट्स ओके, बट व्हाट ही कुड गेट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो उसको फिर टेक्नोलॉजी मिल गया। अब वो टेक्नोलॉजी की यूज करके ये इंडिया में जो भी अभी कार्स बना रहे हैं, उसका सीरीज फटाफट मॉडल्स द वे ही इज रिलीजिंग, तभी वो देखो अभी कितना फास्ट उसका, अभी पहले उसका एक ही मॉडल था, लेकिन अभी देखो कितना, आई एम सरप्राइज्ड टू सो मेनी मॉडल, और वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अभी ये स्टार्टेड डूइंग। अब फिर इसलिए वो अभी टेस्ला मजबूर हो गया कि दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली बेगिंग इंडियन गवर्नमेंट, नहीं हमें आना है, हम बोलते नहीं मत आओ, हम उल्टा बोल रहे हैं। पहले हम रिक्वेस्ट करते थे भाई इन्वेस्ट कर, हम बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? व्हाट ही इज सेइंग, भाई हम आके इधर कार बेचेंगे। तो हम बोल रहे कि नहीं, इधर हमको कार मत बेचो, इधर कार बनाओ, अदरवाइज हमको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमको क्या टैक्स मिलेगा। सो वी आर अगेंस्ट दैट। वो क्या बोलते नहीं, मैं चाइना में बनाऊंगा बेचूंगा इधर, दैट वी सेड नो नो थैंक यू, वी डोंट वांट। So that's why now he has to come on our terms and conditions, that भाई चलो इधर इन्वेस्ट करो, इधर बनाओ। But then even our own manufacturers also, the day when he comes here, we have to again think of if he manufactures here, because वापस ये ब्रांड के चक्कर में लोग अरे टेस्ला, पता नहीं लोग टाटा वगैरह। So it's a competition. Let's see how it goes. But yeah, so I hope you can understand. So these are all some business strategies worldwide, how things are changing so fast. अभी मेजर कॉस्ट है कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, वो है बैटरी।
two third of the cost of the vehicle is battery. 2/3 मतलब आपको 5-6 साल के बाद वापस और एक 5-6 लाख स्पेंड करना पड़ेगा बैटरी चेंज करने के. ओके, आफ्टर 5-6 years battery is dead. Then why do you want to buy an electrical vehicle when you are not maximum utilizing the electrical vehicle? You should use the electrical vehicle only when you recover the 7 lakhs in these 5 years. Then it is worth. या आपने घर पे रखा, हर रोज एक 10 किलोमीटर जाके आया समझो, then better buy a petrol vehicle because you are not using the fully battery. Understood? अदरवाइज वेस्ट हो रहा है आपका, आपका रिकवर नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 years के बाद वैसे भी आपको फेंकना है, whether you use it or you don't use it. It is a dead. That's a life. ठीक है? So I think that's the thing. But then battery is not just a physics and chemistry. Please remember, there is a lot of software is there in the battery. Please understand this. That's why please understand, as a computer science or electronics or telecommunication, whatever, there is a lot of software, hardware, algorithms are running. That's why it is called a BMS, battery management system. It's not that simple to charge a battery or to discharge a battery of a lithium ion. लेड एसिड में कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है ना. एक जमाने का अपना लेड एसिड जो है उसमें कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है. However, lithium ion is not a one single battery. It is a cell. एक छोटा सा अपना सेल्स आपने देखा ना, वो सेल्स है. ऐसा पता नहीं how many hundreds and thousands of cells से जाके एक बैटरी पैक बनता है. What you have to manage is each cell का charging and discharging and temperature, everything. That is called monitoring. That's why there is a tremendous software and hardware is there in the battery itself. So imagine कितना $1 billion इंडस्ट्री है जिसमें वापस आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा भी उसका एफिशिएंसी इंप्रूव करके दिखाओ. जो बैटरी 5 साल में डेड होने वाला है और एक 6 महीना बढ़ा के दिखाओ, मतलब आपने कितना पैसा बचा है, thousands of rupees पर कस्टमर बचा है. तो आपको कितना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, $1 billion का इंडस्ट्री है. That's the beauty of these areas. A small improvement in efficiency by your algorithm or some knowledge, whatever, your smart algorithms, whatever you are saving, it leads to huge income everywhere, in every branch. That's why I'm saying software, hardware, partition जो है, जो term जो है ना, आपको जिंदगी भर ये आपको इसे research for you. Because it all leads to somewhere the performance of the system. Or performance of the system, it depends on several parameters. So last 2 days में whatever I was presenting. Okay, so let's take a break now. What we do is when we assemble back, so you fill the form, that Google form I have shared with you, all your details. Those who can pay, you can pay it. Those who cannot pay, just let me know. We will note down when you are paying, but we'll issue the boards, all the components. But you are promising that you will pay. We will issue it. Okay. And then we'll start our that. What is that? Today, what we will be doing is minimum system. Minimum means we solder only a small portion where you connect it to the computer and write a program, and एक ही component है LED, बस एक LED को ऑन करके देखना है. इतना प्रोग्राम लिखा मतलब your board is working. That's what we want to demonstrate. उसके बाद I am telling you at least another 2 weeks, 3 weeks हम कोई भी सोल्डर नहीं करने वाले इसके ऊपर. We don't need to do any soldering. इसके ऊपर ही you have at least 1 month work है. आपको प्रोग्राम्स लिखना है, अभी सॉफ्टवेयर लिखना है. That's what called coding club. ज्यादा सोल्डरिंग करने, बाकी सब हम आराम से पॉपुलेट करेंगे, कोई हरी नहीं. इतना सोल्डर करने के बाद आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि यू आर ए वेरी गुड कोडर. देन जो आपको नॉलेज नहीं है वो हम करेंगे उसके बाद. बट अंडरस्टूड?
दैट मीन्स हम क्या करने वाले, खाली मैं आपको एक एलईडी देने वाला, तो इसके ऊपर इतना क्या प्रोग्राम लिखने वाला है कि 2 महीना या 1 महीना क्या लिखने वाले आप, क्या लिखने वाले आप? वो एलईडी अलग अलग तरीके कितने बार, चलो कितने बार, 2 महीना एक ही एलईडी के। So it's not about LED. I am saying 2 months we are going to write the programs of all first year mathematics. आप जितना भी आप अभी मैथ्स में, जो भी फिजिक्स में, वट एवर इज द इक्वेशन, आपको कहीं भी इक्वेशन दिखाना, चलो इधर लिख के दिखाओ मुझे, एवरीवेयर। आपको कोई मैथ्स का टीचर ने बोला सॉल्व दिस, तो इधर मुझे सॉल्व करके दिखाओ। मतलब वो प्रोग्राम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इधर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आपका टीचर ने वो कंप्यूटर में या पेपर के ऊपर सॉल्व करने के बोला था, बट मैं चाहता हूं वही चीज इस पे, आपका सीपीयू ये है अभी, आने वाला एटलीस्ट 1 मंथ तक हर चीज इस पे करके दिखाओ। इस पे करना मतलब दिस इज नॉट कंप्यूटर, इट इज अदर देन कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर जैसा कीबोर्ड नहीं है, कंप्यूटर का माउस नहीं है, कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपका ऑल मैथमेटिक्स जो आप कंप्यूटर पे लिखते हो, इस पे लिखना। So that's why I said my way of teaching is something different. Research हमेशा ऐसे रहता है, right? Mother of research is need. When there is a need, research automatically happens. कोविड आया था, इसीलिए हम लोग वो जो गन जो है, वो टेम्परेचर गन, वो आया था ना, बिना टच करके मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, दूर उधर ही रहो। ये पहले नहीं, कोई नहीं था, पहला था, पहला दैट गन वाज देयर व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री। आई वाज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन सोलर कंपनी। हमको चाहिए था वो गन, हमने एक जमाने में अपने एसपीआईटी का बिल्डिंग में भी वो इंस्टॉल किया था, अभी निकाल दिया। which generates सन का जो रेडिएशन जो है, we were focusing at one point and that temperature is around 800 degrees centigrade. तो वो टेम्परेचर कैसा मेजर करूं 800 डिग्रीज, नजदीक तो जा नहीं सकता, तो इधर बैठ के हम लोग गन से मेजर करते थे, शूट करते थे उसको। सो आई विल कम टू नो व्हाट इज द टेम्परेचर। सो वो एप्लीकेशंस था, बट डू यू नो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट गन दैट टाइम? 70,000 रुपीज। ठीक है, अभी वो गन का कॉस्ट कितना है? लेस देन 1,000 रुपीज। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सेकंड, कोविड पे पल्स ऑक्सीमीटर, एक जमाने में हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में पिक्चर्स में देखते थे, कुछ लगाया जैसा हम लोग वो अमिताभ बच्चन का फिल्म में, वो फिल्म में छोटा पापा, no that no he was a pa. So it's that instrument was a expensive intensive care units people were using. COVID period pe everybody can afford to buy it because less than 1,000 rupees. So that's what I am saying. When there is a demand, invention automatically happens. अब हम लोग ड्रोन्स का पहले हम लोग ऐसा खेले ऐसा डिमांड था ना, हेलीकॉप्टर जैसा पीपल वर बाइंग। डू यू नो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए ड्रोन टुडे? इवन इन दिस G20 मीटिंग में भी व्हाट इंडिया वाज बार्गेनिंग विथ यूएस फॉर व्हाट ड्रोन, यू नो, वी वर हार्डली आस्किंग फॉर फ्यू ड्रोन्स, अराउंड 20 ड्रोन्स। डू यू नो व्हाट इज द कॉस्ट? $3.6 billion. खाली 20 drones. Do you understand $1 billion? एक एग्जाम्पल है, टुडे पाकिस्तान रिक्वायर्स $2 billion टू रन द कंट्री। ठीक है, अभी रिसेंटली गया ना वर्ल्ड बैंक, खाली $2 billion, एंड वी आर आस्किंग फॉर 20 drones ऑफ 3.6 billion। मतलब एक कंट्री चला सकते, इतना समझ गए, इतना पैसा होता है। तो ड्रोन जो अभी भी हम लोग को 10,000 पे बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं,
but 2.6 $3.6 billion. अंडरस्टूड. सो क्यों चाहिए उतना कॉस्टली ड्रोन? बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी का बात चल रहा है, तो इतना एक्सपेंसिव है. जहां कुछ एरियाज जो है, दैट्स व्हाट आई सेड, व्हेन देयर इज अ नीड, automatically research happens. So people do that. Okay, so let's take a break. We'll meet at 2 o'clock. Okay, we'll take a break and we'll meet at 2 o'clock. Sir, we can pay in installment. Yeah, sure. Yes, Parth, we can do that. Next session also, you can do it yourself. You can have your own board. We can do soldering and testing. Absolutely no problem. So we'll take a break and we'll meet at 2.